Nice. Krishna's helping me out. कृष्ण मेरी मदद कर रहे हैं। Hare Krishna. Samran. Krishna. Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj ki jai. Hare Krishna. Ekadashi Vrata ki jai. Welcome back, Deva ki jai. Hare Krishna. What are you doing back there? आप पीछे क्या कर रहे हैं? Panini took your spot? पनीनी आपकी जगह ले ली? He's more greedy than you? आपसे ज़्यादा लोभी हो चुके हैं? Now you have competition. अब आप में प्रतियोगिता होगी। Prabhupada said transcendental competition. प्रभुपाद बताते हैं दिव्य प्रतियोगिता। Prabhupada was saying last night the only the price that you have to pay to reach the goal to get Krishna prema is loyal, greed, spiritual greed. श्री प्रभुपाद बता रहे थे कल रात की आपको आध्यात्मिक सफलता कृष्ण प्रेम में प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकानी है वो है लॉयल। So without spiritual greed and perfectly anxious to know, extreme inquisitiveness, you cannot advance in your spiritual life. तो अगर आपको जानने का लोभ नहीं है, उत्सुकता नहीं है, व्याकुलता नहीं है और बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं है आप, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। Spiritual greed to do sadhu sangha and hear Hari-katha, Krishna-katha. आध्यात्मिक लोभ कृष्ण कथा हरि कथा श्रवण करने के लिए साधु संग के लिए and not out of curiosity. और किसी जिज्ञासा का पूरा करने के लिए। Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj not interested to deal with people who were just curious और श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज or not serious. उन लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते जो गंभीर नहीं है। But that we have to know, we must know what is the absolute truth. हमें जानने की ये पूरी तरह से व्याकुलता होनी चाहिए। मुझे ये जानना ही होगा परम सत्य क्या है। That's the price. ये है कीमत। To get mercy. कृपा पाने के लिए। So that's our test. How serious are we? तो ये हमारी परीक्षा है, हम कितने गंभीर हैं। How inquisitive are we? हम कितने जिज्ञासु To हैं। know all science, all the subtle science, exacting science of Krishna consciousness. सारा सूक्ष्म विज्ञान, सारा ये विशेष विज्ञान कृष्ण भावनामृत का जानने के And लिए। what does it take to understand and achieve the goal? और इसके लिए क्या हमें कीमत चुकानी पड़ेगी इस लक्ष्य को समझने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए। And great determination and greed to risk everything to attain it. और हमारा दृढ़ निश्चय और सारा लोभ हमें लगाना होगा ताकि हम इसको किसी भी तरह प्राप्त कर सकें। Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, someone come to him and he would say, don't come with round trip ticket. श्री गौर किशोर Don't come with return ticket. श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के पास कोई आते थे, वो उनको बताते थे अपना वापसी का टिकट लेकर यहाँ मेरे पास मत आना। Just in case. कि कोई कहीं जरूरत न पड़ जाए। He said, you come with one-way ticket. अगर आप एक ही रास्ता का टिकट लेकर आ रहे हैं, बिना किसी हिचक Do or die. जीने या मरने का, This attitude. इस तरह का रवैया। We're weak, hesitating, doubting. You cannot advance in spiritual life. अगर हम कमजोर हैं, हम हिचक रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। Or if we don't really care about the subject matter, we're not greedy, not inquisitive to know, to have to know, how you can get mercy? अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, ये ज्ञान क्या है, हमारे अंदर उत्सुकता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, लोभ नहीं है, तो कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? Very simple-hearted, but you're very greedy, very inquisitive. This is very good qualification for spiritual life. श्री प्रभुपाद बताते हैं आपका हृदय अगर बहुत सरल है, आपको बहुत ज़्यादा लोभ है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी योग्यता है उन्नति प्राप्त करने के लिए। Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Govinda Swami Namine Namo Vishnupadaya Krishna
Shishimad Gaura Swami Srila Gaura Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktisiddhanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Shishimad His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Ramsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radha-Kunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Shri Shri Jagannatha Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Shri Bhanitai Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Jagannatha Baladev Lady Subhadra Devis Ki Shri Shri Radha Gopinath Ki Shri Shri Radha Gopal Ju Ki Shri Shri Radha Madhava Ki Premanam Sankirtan Jagya Ki Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga Mahaprabhu. Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj Disappearance Day Ki Haribol. Om Jnana Tamaranda Shagananjana Shalakaya Chakshunalitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatruvyashcha Kripa Sindhu Cha Patitam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Adam is enthusiastic for chanting Hare Krishna today. Adam बहुत उत्साह में आज हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए. He's very fortunate. बहुत भाग्यवान है. We all are. हम सभी हैं. So it's said that we should offer our respectful obeisances on the appearance day, disappearance day of great Vaishnavas. तो ऐसा बताया जाता है हमें अपना सादर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए महान वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस पे. And Krishna said, those dear devotees of mine are more dear to me even than my own life. और कृष्ण बताते हैं मेरे ऐसे प्रिय भक्त मेरे जीवन से प्राण से भी ज्यादा मुझे प्रिय हैं. And serving them and glorifying them is more pleasing to me, Krishna said, than even you're trying to glorify or serve me directly. और उन बताते हैं कि उनका सेवा करना और उनका गुणगान करना मुझे और ज्यादा प्रिय है मेरे स्वयं के गुणगान और मेरे स्वयं के सेवा से. Krishna always wants to glorify his dear devotees. कृष्ण हमेशा अपने प्रिय भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं. And of course his dear devotees always want to glorify Krishna. और अवश्य उनके प्रिय भक्त भी हमेशा कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं. So we'll try our best to try to speak a few words about Shri Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. तो हम अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे ताकि हम कुछ शब्द कह सकें श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के बारे में. And there's a nice in Vaishnava biographies there's a description of Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. और वैष्णवों के चरित्रों में एक गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के बारे में भी बताया गया है. And this is compiled by Mahanidhi Swami. और एक बनाया गया है महानिधि स्वामी के द्वारा. Disciple of Srila Prabhupada. श्री प्रभुपाद के शिष्य. I believe so. मुझे उम्मीद है. So it's explained in 1849, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he left the Grihastha life after the death of his wife.
तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 1849 ईस्वी में उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद। So he knows exactly what is grihastha life also. बहुत अच्छे से पता था कि गृहस्थ जीवन क्या होता है। Then he moved to Vrindavan. He took initiation from Shri Bhagavata Das Babaji. और वो वृंदावन गए, उन्होंने श्री भगवत दास बाबा जी से दीक्षा प्राप्त किया, who was a disciple of Shri Jagannatha Das Babaji. जो शिष्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के। For over 30 years, Gaura Kishore Das stayed in Vrindavan performing bhajan under the trees at Giri Govardhana. और 30 साल तक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने वृंदावन के जंगलों में एक एक पेड़ के नीचे प्रतिदिन भजन किया। 30 years. 30 सालों तक। That's in Nandagram, Barshana, Radha-Kunda, Suryakund, Raval, Gokul, all of these places you just traveled, sit under the tree and chant Hare Krishna Mahamantra. तो इन सारे जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया और एक एक पेड़ के नीचे वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया। He's sitting in seclusion. He chanted 200,000 names of Krishna every day. और वो अकेले एकांत में बैठ के प्रतिदिन 2 लाख नाम जाप करते थे कृष्ण का। 128 rounds of japa every day. 128 माला प्रत्येक दिन। How close are we getting to that? हम कितने नजदीक पहुंचे हैं उसके? With Shuddha Nam, और वो भी in pure Krishna prema. शुद्ध नाम, शुद्ध कृष्ण प्रेम के साथ। We won't even get into what is the quality of our chanting right now. अभी हम बात भी नहीं कर सकते हमारे जप की क्या गुणवत्ता है। Suffice it to say, we need a lot of mercy. तो हमें बहुत कृपा की जरूरत है। From Vaishnavas. वैष्णवों की। And it says if you glorify Vaishnava, they're always merciful, but they become especially merciful. वैष्णव हमेशा कृपालु होते हैं, लेकिन अगर आप उनका गुणगान करेंगे उनके आविर्भाव तिरुभाव में तो और ज़्यादा कृपालु होते हैं। On their holy appearance days or disappearance days. उनके आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के दिन। So we're hoping we can get some of that mercy, even one drop. तो हम उम्मीद करते हैं हमें कुछ कृपा प्राप्त हो सके, हो सकता है एक बूंद ही बस कृपा मिल सके। So he was always in the mood of separation from Radha-Govinda. तो वो हमेशा विरह के भाव में होते थे राधा गोविंद से। And he's chanting 128 rounds of pure holy name and crying profusely in this mood of separation. तो वो प्रत्येक दिन 128 माला जप करते थे शुद्ध नाम और इस राधा गोविंद के विरह के भाव में। And he would loudly chant the holy names. और वो जोर से पवित्र नाम का जप करते थे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he was always in a mood, a deep voice full of lamentation. और वो हमेशा बहुत गहरी आवाज में और शोक के विरह के भाव में रहते थे। So he is worshipping Srimati Radharani and Krishna in this type of mood, very intimate, dear Radha Priya Sakhi. तो वो राधा और कृष्ण के इस मनोभाव से उनकी पूजा करते थे, बहुत ही करीबी पार्षद राधा प्रिय सखी के रूप में। His mood of renunciation was, you cannot compare how renounced he was. और उनके संन्यास का भाव आप कल्पना नहीं कर सकते कितना ज़्यादा था। Sometimes he would even eat the mud from the banks of the Radha-Kunda or the Jamuna. यहाँ तक कि कभी-कभी वो मिट्टी खाते थे राधा कुंड के किनारे या यमुना नदी के किनारे की। You cannot imitate this. You can only be in awe of such personalities who can live like this. हम इसकी नकल नहीं कर सकते, हमें हमेशा इसकी बहुत ज़्यादा सम्मान करनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्वों की। You're completely pure. वो पूरी तरह से We tried to eat mud, we'll be in the hospital for 3 weeks. आप मिट्टी खाने की कोशिश करेंगे, अस्पताल में 3 हफ्ते बैठे रहेंगे। Well, like it's mud, you know. No spiritual vision, you know. We'll commit offense eating mud. We'll be in the hospital. हम अपराध करेंगे अगर हम इस तरह से मिट्टी खाएंगे तो हम अस्पताल में रहेंगे। Other times he took madhukari from Brijavasis. He was begging from them. और कभी-कभी वो मधुकरी करते थे ब्रिजवासियों से। And this is their daily practice because it puts you in a humble state of mind, begging little food. और ये उनको ये अभ्यास करते थे ताकि ये विनम्र भाव में हमेशा रह सके कि उन्हें खाने के लिए भीख मांगना पड़ती है। From 1 to 7 houses. 1 से 7 घर तक में। Not going and looking for thali plates in every house, you know. ऐसा नहीं कि हर एक घर में जाके थाली और प्लेट मांग रहे हो।
and just take a little bit from every house. हर एक घर से थोड़ा थोड़ा लेना. Just like a bee collects a drop of honey from each flower. जैसे एक मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है हर एक फूल से. And he saw all the Brijabasis, residents of Vrindavan, as being direct personal associates of Radha and Krishna. और वो जहाँ ब्रजवासी के सारे लोगों को सीधे सीधे राधा कृष्ण के पार्षद मानते थे. As a result of this vision, he would pay respects to every person. और इस आध्यात्मिक दृष्टि होने की वजह से वो सभी लोगों का सम्मान करते थे. Every cow, यहाँ तक कि हर एक गाय, every animal, हर एक पशु, every bird, हर एक पक्षी, every tree, हर एक पेड़, every creeper, हर एक लता, even insects and ants, they were all in Holy Dham. यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े और चींटियों जो भी वो धाम में हैं वो. We're walking around Holy Dham saying, when is someone going to recognize how sincere I am? हम जब धाम में घूमते हैं हम ऐसा प्रयास करते हैं कि कब कोई हमें पहचान पाए, कितने ईमानदार व्यक्ति हैं. Pay some respects. कुछ सम्मान दो मुझे. You see the difference? आप देख सकते हैं. So we're here at the perfectional stage and we're supposed to measure where are we compared to this real devotees, real Premi Bhaktas, Mahabhagavatas. Where are they? Where are we? तो जब हम इस महाभागवतों और हमारी तुलना करते हैं तो हम देख पाते हैं उनकी क्या योग्यताएं और हमारी क्या योग्यता है, हम कहाँ हैं. And why they're so dear to the Lord. और क्यों वो इतने प्रिय हैं. And how they became so dear to the Lord. और कैसे वो बन पाए भगवान के इतने. So we should always measure ourselves up to that standard, higher standard. तो हमें हमेशा अपने आप को आंकना चाहिए उस ऊंचे स्तर से, हमेशा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर से. And it's a joke, you cannot even compare. और ये एक मजाक है, हम तो तुलना भी नहीं कर सकते. So this is meant to humble us out completely. तो ये हमें पूरी तरह से विनम्र बनाने के लिए कहा जा रहा है. Otherwise, what are we proud about? वरना हम किस चीज का अहंकार करते हैं. What have we achieved spiritually? हमने क्या प्राप्त किया है आध्यात्मिक रूप से. So complete utter humility he manifested. पूर्ण रूप से विनम्रता प्रकट करते थे वो. Paying respects to one and all. सभी को सम्मान देते थे. While staying in Varshana, he made a flower garland every day. और वर्षाना में रहते हुए प्रत्येक दिन वो फूल की माला बनाते थे. For Radha and Krishna. राधा कृष्ण के लिए. And then after 30 years of rendering this intimate services to Radha and Krishna in Vrindavan, तो इस तरह से 3 सालों से बहुत करीब तक राधा कृष्ण की सेवा करने के बाद वृंदावन में Babaji Maharaj felt inspired by the divine couple to see Shri Navadvip Dham. बाबाजी महाराज को प्रेरणा मिली उस युगल से पूजा करने के बाद कि उनको नवद्वीप धाम जाना चाहिए. And he visited all the Leela sthanas of Lord Gauranga in Gauramandala. और वो गौरमंडल के लिए जितने भी लीला स्थली हैं लॉर्ड भगवान गौरांग की वहाँ सभी भ्रमण करने के लिए गए. And in Navadvip he used to sing one song, one bhajan, which means by receiving Nittai's mercy. और वो नवद्वीप में एक भजन गाया करते थे जिसका अर्थ होता है कि निताय की कृपा प्राप्त करने के बाद one gets Gauranga's mercy, किसी को गौरांग की कृपा प्राप्त होती है, which makes one eligible for Krishna prema. जो किसी को योग्य बनाता है कृष्ण प्रेम के लिए. So by getting Lord Nityananda's mercy, one automatically gets Gauranga's mercy, and with that mercy, one becomes eligible to receive Krishna prema. तो नित्यानंद की कृपा प्राप्त करने से हमें गौरांग की कृपा प्राप्त हो सकती है और उस कृपा से हम योग्य बन सकते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए. And with that Krishna prema, one can attain to the loving service of Srimati Radharani and the gopis. और इस कृष्ण प्रेम से कोई श्रीमती राधा रानी का प्रेम में सेवा और गोपियों की प्रेम में सेवा प्राप्त कर सकता है. Krishna prema, to be able to serve with loving devotion Srimati Radharani and her associates. कृष्ण प्रेमा जिसकी मदद से हम श्रीमती राधा रानी और उनके नित्य पार्षदों की सेवा कर सके, प्रेम में सेवा. Let's explain. Gaura Kishore Das Babaji Maharaj was the embodied form of Shri Rupa Raghunath's renunciation. और श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज मूर्ति थे रूप रघुनाथ की मूर्ति. Completely detached from the material world. पूर्ण रूप से निरासक्त थे इस भौतिक जगत से. He would just wash some discarded cloth just to cover his body. और वो कुछ फेंके हुए कपड़े धोकर पहनते थे ताकि अपने आप को बस ढक सके शरीर को. He drank from a rejected clay pot.
और वो किसी फेंके हुए मिट्टी के बर्तन में पीते थे पानी। Then the parched rice mixed with Ganges water or simply some mud from the Ganga's bank, that sustained his life. और कुछ चावल और गंगा के जल लेकर या फिर कभी-कभी गंगा की मिट्टी लेकर वो अपना जीवन चलाते थे। He carried 2 books written by Shri Narottam Das Thakur. और वो 2 किताब लेकर रखते थे नरोत्तम दास ठाकुर की लिखी हुई, Prarthana and Prema Bhakti Chandrika. प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। Now it's interesting, it says he was illiterate. और ये बहुत रुचिकर है क्योंकि असल में वो अनपढ़ थे। And even it said he couldn't even sign his own signature. और ऐसा कहा जाता था वो अपना स्वयं का हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते थे। But here it's saying that he's carrying these 2 books with him. लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो अपने साथ ये 2 किताबें रखते थे। On Ekadashi, he didn't eat or drink even a drop of water. एकादशी के दिन वो तो ना तो खाते थे और ना पानी की एक बूंद भी पीते थे। Recognizing him to be a Mahabhagava, the topmost Vaishnava devotee of the Lord, many people tried to serve him. और बहुत सारे लोग ये जानकर कि ये प्रेमी भक्त महाभागवत है उनकी सेवा करने का प्रयास करते थे। But he never accepted it. लेकिन कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। He never accepted their service. कभी उन्होंने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की। And when it's explained he was trying to do his bhajan, many people would come and try to get the mercy blessings from him. तो ऐसा बताया जाता है कि कई बार वो भजन कर रहे होते थे, कई सारे लोग उनके पास आकर उनसे मिलने आते थे ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। But because they were materialistically inclined, then he would just hide himself from these type of people. और क्योंकि वे लोग उनका भौतिक झुकाव होता था तो वो उन ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को छुपा लेते थे। He considered a great botheration to his bhajan. ये उनके भजन में उनको बहुत रुकावट लगती थी। And said he would sit near the latrine, near the toilet, तो वो वहाँ कैसे लैट्रिन या फिर टॉयलेट के आसपास which had some bad smell. जहाँ जो गंदी बदबू आता That है। way people were less inclined to go over to that place. तो लोगों की झुकाव कम होगा ऐसे गंदे जगह में जाने के लिए। That way he could just avoid all of the public because everybody understood this is a great Mahabhagavata devotee. तो इस तरह से सभी लोग जो है उनके पास इस तरह नहीं जा पाते थे और सब जानते थे कि महाभागवत प्रेमी भक्त हैं। Regularly he associated with and heard Srimad Bhagavatam from Srila Bhaktivinoda Thakur. और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से वो निरंतर श्रवण करते थे श्रीमद् भागवतम। We see that house, Bhaktivinoda Thakur's house there, Godrum. हमने देखा है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का घर गोद्रुम द्वीप में है। And also I think the samadhi there of Kishore Das Babaji Maharaj. और मुझे लगता है वहाँ समाधि भी है गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का। So they used to sit in that courtyard and they would discuss Srimad Bhagavatam. तो वो उस आंगन में बैठ के श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते थे। And Srila Bhaktivinoda Thakur many times would ask him to speak on Srimad Bhagavatam. और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कई बार उनसे कहते थे कि श्रीमद् भागवतम पे वो कुछ व्याख्यान करें। But he was illiterate fellow. लेकिन वो अनपढ़ व्यक्ति थे। But his realization, his explanation and realization, everyone would be asking him, they wanted to hear what was his realization. और जब लोग उनके साक्षात्कार और उनका व्याख्यान सुनते थे तो लोग बहुत जिज्ञासु हो जाते थे उनके व्याख्यान। So he was constantly absorbed in bhajan. तो वो निरंतर हमेशा अपने भजन में लगे रहते थे। He had no desire to make any disciples. उनकी कोई इच्छा नहीं थी शिष्य बनाने की। Only on the request of Bhaktivinoda Thakur, however, he reconsidered. और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के कहने पे उन्होंने फिर से इस पे विचार किया। Because Bhaktivinoda Thakur wanted that his son Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur take diksha initiation from Kishore Das Babaji Maharaj. क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने बेटे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को चाहते थे वो श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से ब्राह्मण दीक्षा लें। And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went to him 3 different times and he kept saying, no, not, I don't want any disciple. और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 3 बार उनके पास गए और उन्होंने बार-बार उनको मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई शिष्य नहीं चाहिए। So only took 1 disciple. तो उन्होंने सिर्फ एक शिष्य स्वीकार किया। And it's explained that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was saying that because he felt himself a little bit proud because he was the greatest scholar of the day. और श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे वो अपने आप को थोड़ा अहंकार समझते थे, अहंकारी समझते क्योंकि उन बहुत बड़े विद्वान थे उस समय में। So in this way it was very humbling. He mentioned that he would take initiation from someone who everyone understood was a illiterate person. तो ये उनके लिए थोड़ा अहंकार की भी बात थी कि कैसे वो किसी अनपढ़ व्यक्ति से जाकर दीक्षा ग्रहण करें। But it's also understood that or shown that scholarship
and this pride of learning, all of this thing, this is not at all required for pure devotional service. लेकिन ये भी बताया जाता है ये सारी विद्वता और ये सारा ज्ञान और दंभ ये योग्य हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अयोग्य बनाता है. And his father Bhaktivinoda Thakur gave him Harinam, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हरिनाम दीक्षा दिया. And also, it's not like a family business. और ये कोई पारिवारिक व्यापार नहीं है. Because they were so heavily preaching against this hereditary type of passing down of this spiritual authority. और क्योंकि वो इसके बहुत कड़े तरीके से प्रचार करते थे, बहुत भारी तरीके से जो पारिवारिक परंपरा जो लोग चला रहे हैं अपने स्वयं के परिवार से ही इसके खिलाफ बहुत सख्ती से बात करते थे वो. So, as we were mentioning, in order to keep people from approaching him, then he would sometimes reside next to the laboratories. तो कई बार हम चर्चा कर रहे थे कई वो लोगों का संग त्याग करने के लिए स्वीकार करने के लिए जो है किसी शौचालय के आसपास भजन करते थे. And sometimes he was there for 6 months. और कभी-कभी वो 6 महीने तक वहाँ रहते थे. And when the public officials they came, they understood he's such a great devotee. They offered to build him a proper bhajan kutir. और जब कुछ लोग वहाँ पर उनको समझ पाए बहुत बड़े भक्त हैं महाभागवत हैं तो उन्होंने उनसे जिज्ञासा की उनके लिए एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं. And Babaji Maharaj he locked himself inside the lavatory. और तब गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने अपने आप को शौचालय के अंदर बंद कर लिया खुद को. And he said, I already have one. उन्होंने कहा मेरे पास पहले से ही है मंदिर. Wow, we need like 4-5 star accommodation, right? हमें 4-5 सितारा जो है व्यवस्था चाहिए रहने के लिए. Unbelievable. अविश्वसनीय है. He believed that associating with materialistic people, asatsanga, और वो विश्वास करते थे भौतिकतावादी लोगों के साथ संग करके असत्संग करके that was much worse than the smell of stool in the latrine. ये उस जो लैट्रिन के से गंदी बदबू आ रही है उससे भी ज्यादा बदतर है. It's safer to associate with the stool in the latrine than this so-called family members in asatsanga. ज्यादा सुरक्षित worse smell also. ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे स्वयं को इतने बदबूदार लैट्रिन में और इस असत्संग से पारिवारिक संग से भी उससे भी ज्यादा बदबूदार था ये पारिवारिक inspiration for asatsanga tyaga. कैसा आपको प्रेरणा मिल रहा है असत्संग त्याग करने की? Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he advised a Calcutta doctor who wanted to open a free health clinic in Navadvip Dham. और श्रीला गौर किशोर बाबाजी महाराज को कलकत्ता के एक डॉक्टर ने कहा कि वो एक मुफ्त अस्पताल खोलना चाहते हैं नवदीप धाम में. Right, so humanitarian work, right? Free health clinic. कुछ परोपकार करना चाहते हैं, मुफ्त अस्पताल खोलना चाहते थे. He said, if you really want to live in Navadvip Dham, then give up your desire to run a free health clinic. तो उन्होंने उनको कहा कि अगर आप नवदीप धाम में रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को त्याग कर दीजिए कि आप एक मुफ्त अस्पताल खोलेंगे नवदीप धाम. Just for healing sense enjoyers and sinful people. बस इंद्रिय तृप्ति करने वाले और पापी लोगों को ठीक करके. If you want to render substantial service, अगर आप कुछ असल सेवा करना चाहते हैं, then renounce everything. तो सभी चीजों का त्याग कीजिए. Except what promotes Hari Bhajan. उस चीज को स्वीकार कीजिए अनुकूल है जो हरि भजन के लिए. So instead of the free clinic for the sense gratifiers, instead renounce everything and just think how to do Hari Bhajan. तो अपने इस इच्छा को त्याग करके कि मैं मुफ्त अस्पताल खोलूंगा इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों के लिए, सभी चीजों का त्याग करके जो उन चीजों को स्वीकार कीजिए जो हरि भजन के लिए योग्य हैं. That's the real humanitarian work. ये असल परोपकार है. How to help others. कैसे लोगों अन्य लोगों की in their मदद spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में. He said all other kinds of duties and services, they simply bind one to this ghastly cycle of karmic action and reaction. और बताते हैं किसी भी अन्य तरह का कर्तव्य ऐसे लोगों को बांधता है इस तरह के बहुत ही घने कर्म बंधन में. So even pious work is also action and reaction. तो यहाँ तक कि पुण्य कर्म में भी हमें प्रतिक्रिया मिलती है और उसकी दुष्क्रिया में मिलती है. Babaji Maharaj, he spoke very seriously to a newly married man. और श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज ने बहुत ही कड़े तरीके से बोला एक नवविवाहित युगल के साथ. And he told him that a Vaishnava wife is extremely rare. और वो उन्होंने कहा कि एक वैष्णव पत्नी बहुत ही दुर्लभ है. And it is extremely difficult to find
और ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है उसको In ढूंढ this पाना world. इस जगत में। If one has the good fortune of having one, अगर किसी को भाग्य मिलता है ऐसी पत्नी प्राप्त करने का, one should see it as a benediction from Krishna. किसी को देखना चाहिए वरदान के रूप में कृष्ण के द्वारा। The wife worships the husband as the Lord and Master. पत्नी अपने पति की और अपने भगवान की पूजा करती है। And similarly, the husband should worship that Vaishnava wife. और उसी तरह पति को भी अपनी वैष्णव पत्नी की पूजा Because करनी she चाहिए। is Krishna Dasi, the servant of Krishna. क्योंकि वो कृष्ण दासी है, कृष्ण की दास। In this way, the husband can protect his devotional enthusiasm और इस तरह से पति अपना आध्यात्मिक उत्साह बनाए रख सकता है by not considering his wife to be his maidservant, और अपनी पत्नी को स्वयं का दासी ना समझकर, but she belongs to and is the maidservant always of Krishna. जबकि वो कृष्ण की है और हमेशा कृष्ण के दासी हैं। He says one who wants bhojana or eating palatably will spoil his bhajan. और वो बताते हैं जो अच्छा भोजन करना चाहते हैं, स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं, वो अपना भजन बर्बाद करेंगे। He chose the mud and the simple rice, right? वो तो मिट्टी और जो है कुछ साधारण चावल खाते थे। And that was, it says here, was one of his favorite quotes. और यहाँ पे उनके सबसे पसंदीदा कथन बताए गए हैं। In other words, he said, eating here and there just to simply gratify the tongue कहते हैं यहाँ वहाँ खाना बस अपने जीभ की संतुष्टि के लिए will destroy any attempts to worship Krishna. आपको सारे प्रयास नष्ट कर देगा कृष्ण की पूजा के लिए। Once a devotee ate some festival prasadam in his bhajan kutya, एक बार एक भक्त उनके भजन कुटीर में उन्होंने किसी उत्सव का प्रसाद खाकर आए वो, and Babaji Maharaj would not speak to him for 3 days. और बाबाजी महाराज 3 दिनों तक उनसे बात तक नहीं किया उन्होंने। On the 4th day, he said, "You accepted festival prasadam और चौथे दिन उन्होंने उनको कहा आपने उत्सव का प्रसाद ग्रहण किया है, given by low-class prostitutes and beautiful women. जो नीचे के स्तर की वैश्या और खूबसूरत स्त्रियों ने बनाए थे। And because you took that food without considering its origin, और आपने उस भोजन को स्वीकार किया बिना उसके स्रोत का पता लगाए, your bhajan is useless." आपका भजन पूरा बेकार है। The essence of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj's instructions, तो श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज के सारे निर्देशों का सार ये है, the divine name of Krishna offers the one and only shelter. भगवान का दिव्य नाम ही एकमात्र आश्रय दे सकता है। One should never try to remember Radha-Damodara's transcendental pastimes by artificial methods. और किसी को हमें कभी भी राधा दामोदर के दिव्य लीलाओं को भौतिक प्रक्रिया से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। Only take shelter of holy name, only protection. सिर्फ भगवान के दिव्य नाम का शरण लेना चाहिए, यही एकमात्र रक्षण है। Sentimentally, artificially try to think that we can remember Radha Krishna's pastimes. भावपूर्ण तरीके से या बनावटी तरीके से हमें राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास नहीं करना Constant चाहिए। chanting of the divine names will purify the heart. और निरंतर भगवान के दिव्य नाम का जप आपके हृदय को शुद्ध कर देगा। By chanting Hari Nam, the syllables, the Mahamantra, और हरि नाम और इनके जो शब्दों का उच्चारण करने से Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This will gradually reveal the spiritual form ये धीरे धीरे प्रकाशित करेगा आध्यात्मिक रूप को and the qualities और उनके गुण and the pastimes लीलाएं of Shri Krishna. श्री कृष्ण की। Then you will realize your own spiritual form तब आप अपना स्वयं का स्वरूप देख पाएंगे and service और आपकी सेवा and the 11 particulars of your spiritual identity. और अन्य विशेषताएं आपकी आध्यात्मिक स्वरूप की। What is eternal Swarup will be automatically revealed once you become liberated by chanting pure holy name. आपका नित्य स्वरूप अपने आप आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा जब आप मुक्त हो जाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध नाम जप करके। People that are not necessarily doing the purification and they're artificially, sentimentally trying to try to understand what is your Swarup. तो लोग जो है जरूरत पूरा नहीं कर रहे हैं शुद्धिकरण का पहला और अपने नित्य स्वरूप को बनावटी तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं। That type of practice is a sahaja.
इस तरह का अभ्यास सहज या It's an easy, cheap way out. आसान सस्ता तरीका निकलने का, And it's offensive, actually. यह असल में अपराध है। First, you have to do the work. You have to purify your heart and your consciousness. पहले आपको कार्य करना होगा, पहले अपने हृदय और चेतना को शुद्ध करना होगा, And get free from all types of material attraction and attachment. और स्वयं को सारे भौतिक आकर्षणों से, भौतिक आसक्तियों से मुक्त करना होगा। Then automatically, once Krishna reveals himself, then after that, then he'll also reveal what is your eternal swarup. और जब कृष्ण आपको प्रकाशित करेंगे स्वयं का रूप, तब आप अपना भी स्वयं का स्वरूप देख पाएंगे। Babaji Maharaj wanted that drag my dead body through the streets of Navadvip. बाबादेव महाराज कहते थे कि मेरा मृत शरीर जो है नवद्वीप के रास्तों पे घसीट कर ले जाना। When I leave my body, I want you to just drag my body through the streets of Navadvip. वो कहते थे मैं चाहता हूँ जब मैं मर जाऊँ मेरा मृत शरीर आप नवद्वीप के रास्तों में घसीट कर ले जाए। And a group of so-called advanced devotees, they proposed to commit this sacrilege or this great mistake. और कुछ नाम मात्र के खुद को उन्नत कहने वाले भक्त ने इस प्रक्रिया को करने का बारे में विचार किया, करने का प्रयास किया। And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he challenged them. और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको चुनौती दी। He said that according to the Shastra, one who has had intimate association with a loose woman within the last 24 hours, they are considered contaminated. ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के आधार पर अगर किसी ने 24 घंटे के अंदर किसी भी निम्न स्त्री के साथ करीबी तरीके से संबंध बनाया है तो वो उसको पूरी तरह से दूषित माना जाता है। And therefore they are not qualified to touch my Guru Maharaj. इसीलिए वो लोग योग्य नहीं है मेरे गुरु महाराज को छूने के लिए भी। And in hearing such a bold statement from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, it says the black-hearted brahmanas, they ran away. और श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इतने कठोर शब्द सुनने के बाद जो काले हृदय वाले ब्राह्मण थे भाग गए वहां से। Then on 19th November 1915, तो 19 नवंबर 1915 में Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj joined eternal blissful pastimes. श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज वापस युगल लीलाओं में फिर से जुड़ गए। He says of Gandharvika Giridhari. और गंधर्विका गिरिधारी। And his beloved disciple Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established his samadhi. और उनके प्रिय शिष्य श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि की स्थापना की। On the banks of Sri Chaitanya Math's Radha-Kunda. और राधा-कुंड के किनारे श्री चैतन्य मठ में। Near Lord Chaitanya's yoga pit in Sridham Mayapur. और श्री चैतन्य महाप्रभु का योग पीठ श्रीधाम मायापुर में। In Braja Leela he served Srimati Radharani. और ब्रज लीला में उन्होंने श्रीमती राधा रानी की सेवा की। Guna Manjari. गुना मंजरी के रूप में। His Pushpa Samadhi stands beside the Radha-Kunda Bihari Gaudiya Math near Radha-Kunda. और उनका पुष्प समाधि राधा कुंड में है इस चैतन्य मठ के किनारे। So this personalities, they are not really of this world. और ये व्यक्ति no interest in the world. इस जगत के नहीं है, उनको इस जगत में रहने की कोई रुचि नहीं है। Grossly or subtly. स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से। They're just completely 24/7 absorbed in Hari Bhajan, Krishna-katha. वो 24 घंटे 7 दिन हमेशा कृष्ण कथा हरि भजन में डूबे रहते हैं। And if people were not serious, he didn't want to see them, associate with them. और जो लोग गंभीर नहीं होते हैं वो उनके साथ संग नहीं करना चाहते। And he would be very strict unless you're 100% serious to fully surrender to Radha and Krishna, then I have no interest for you. और वो बहुत सख्त थे, अगर आपको पूर्ण रूप से 100% राधा कृष्ण को शरणागत करने की सेवा करने की इच्छा नहीं है तो मुझे कोई रुचि नहीं है आपको। Bhajan, क्योंकि वो हमेशा भजन के भाव में थे। Bhajan Anandi, भजन आनंदी। so he's a Babaji, Bhajan Anandi mood. बाबा जी भजन आनंदी के भाव में थे। And the Goshti Anandi means more preaching mood. और गोष्ठी आनंदी का मतलब है जो ज्यादा प्रचार के भाव में होते हैं। So Goshti Anandi, they go out into the public and they mix with all of these different types of materialistic people and people who are ignorant and try to somehow or other purify them and speak something to make them understand what are they doing with their life.
और जो गोष्ठनंदी होते हैं वो जाते हैं, लोगों के बीच प्रचार करते हैं और उनको जो अज्ञान में होते हैं, कर्मी होते हैं, उनको किसी तरह शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं वो जीवन की किस स्थिति में फंसे हुए हैं। But Babaji Maharaj, they are a different type of devotee. लेकिन बाबाजी महाराज ये अन्य तरह के भक्त थे। And they're also there to leave an example of complete renunciation. और वो इसलिए आए थे ताकि लोगों को पूर्ण संन्यास का भाव दिखा सकें। Extreme renunciation. जो पूर्ण रूप से संन्यास होता है। And it should help us how to minimize as much as possible. और ये hमें ये दिखाने के लिए है कि हम कितना कम से कम अपना कार्य जरूरत को कर सकते हैं। Material attachments, material desires, material plans, all of these things that have to do only with bodily consumption. सारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां, भौतिक योजना जो जिसका सिर्फ हमारे शरीर के स्तर से संबंध है। And of course, for us to do that, we cannot imitate this. और ऐसा करने के लिए हम उनकी नकल नहीं कर सकते। Only we can try to increase our association and hearing and chanting about Krishna. और हम बस प्रयास करते हैं अपना कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना संग में ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। And by that association with Sadhu Guru Vaishnavas and hearing Hari-katha, Krishna-katha, और साधु गुरु वैष्णव के साथ संग करके उनसे हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करके attraction and attachment to that association of our spiritual master and Vaishnava devotees of the Lord. और हमारा आकर्षण और हमारी आसक्ति हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुनने के उनके साथ संग करने के लिए कृष्ण के भक्तों के साथ, then automatically these material relations and material plans and material associations, everything will become not so significant. तो स्वाभाविक रूप से ये सारे भौतिक संबंध, भौतिक आसक्तियां, भौतिक योजनाएं अपने आप ही तुच्छ हो जाएंगी हमारे सामने। We may not be advanced enough to say the stool smells better than them. आप इतने उन्नत नहीं है, हो सकता है ये कहें कि जो विष्टा का बदबू जो है मेरे भौतिक संग से ज़्यादा बेहतर But है। I guess if we become more and more advanced, we'll understand how that's true. और जैसे हम धीरे धीरे और उन्नत होंगे, विकास करेंगे, तब हम समझ पाएंगे ये असल में कितना सत्य है। Right? So it's worse than stool. तो ये विष्टा से भी ज़्यादा गंदा है। Right? We say like the hog is eating the stool, right? The night soil. कहते हैं जो सुअर है वो विष्टा खाता है, रात में जो विष्टा मिलती है। So we're even worse than the hog. तो हम सुअर से भी गए गुजरे हैं। If we're attached according to his explanation of how he saw asatsanga. अगर हम आसक्त हैं इस असत्संग से और जिस तरह से उन्होंने व्याख्या किया सत्संग क्या है, And also you understand how dangerous this asatsanga is. और वो ये भी समझते हैं कि ये असत्संग कितना खतरनाक है, Because it makes us forget that we are eternal servant of Krishna. क्योंकि ये हमें भुला देता है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। And anything we do in that forgetfulness is more or less sinful activity. और जो भी हम उस विस्मरण में करते हैं वो कम या ज़्यादा पापमय कार्य होता है। Devotee means we should be trying to purify our consciousness. भक्त का मतलब है हम अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए And gradually becoming more and more materialistically renounced. और धीरे धीरे जो है भौतिक त्याग की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। So without association of Krishna's devotees and dedicated to hearing and chanting about Krishna, there's no way to purify the consciousness. और बिना कृष्ण के भक्तों के साथ संग किए बिना और श्रवण कीर्तन को अपनी प्राथमिकता रखे बिना कोई तरीका नहीं है इस भौतिक शक्ति। Without Shravanam Kirtanam, there is no Vishnu Smaranam. श्रवणम कीर्तन के बिना विष्णु स्मरण नहीं किया जा सकता। And without that association with Krishna through hearing and chanting, there's no way to get purified of all the sinful desires and the sinful reactions. और बिना कृष्ण के साथ संग किए श्रवण कीर्तन प्रक्रिया के माध्यम से कोई तरीका नहीं अपनी चेतना को शुद्ध करे और इस सारे पाप की प्रक्रिया को अपने अंदर से खत्म करे। So Prabhupada said those who think they can live outside of the association of devotees are living in a great phantasmagoria, a great illusion. श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो लोग ये सोचते हैं जो भक्तों के संग के बिना आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकते हैं वो बहुत बड़ी कल्पना की दुनिया में मोह में है वो। So our association with Krishna is based on hearing and chanting in association with his devotees. तो कृष्ण के साथ संग आधारित है कृष्ण के भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन में। So it says if you want to get free from material greed, you have to become greedy for sadhu sangha. तो बताया जाता है अगर आप भौतिक लोभ को त्याग करना चाहते हैं तो आपको लोभ प्राप्त करना होगा साधु संग Wherever it is available. जहाँ भी वो उपलब्ध हो। It's the only way to purify greed. यही एकमात्र तरीका है लोभ को शुद्ध करने का। So the more we hear, the more we're benefited spiritually by hearing from our spiritual master. तो जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे और श्रवण का जितना लाभ उठा पाएंगे आध्यात्मिक गुरु से,
the more we become attracted to Krishna consciousness and that association, तो उतना ज़्यादा हम आकर्षित होंगे कृष्ण भावनामृत से और इस संग से, then our spiritual master gives food for the soul. और हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें आत्मा का भोजन देंगे. That's completely different type of food. ये बिल्कुल ही अलग तरह का भोजन है. And nobody can give that. Only our Gurudev can give that. और ये कोई नहीं दे सकता, सिर्फ हमारे गुरुदेव हमें दे सकते हैं. So once you start getting attraction, attachment to that food for the soul, जब एक बार आप आकर्षण और आसक्ति प्राप्त कर लेते हैं उस भोजन के प्रति, then we'll realize this is the real relationship, the real attachment, the real attraction, which will automatically make us unattracted to material life and material association. तो फिर ये आसक्ति और ये आकर्षण अपने आप ही हमें मुक्ति प्रदान करेगा भौतिक आकर्षण से, भौतिक आसक्तियों से. My Gurudev used to say, materialists, they say on Friday, if I don't get to the bar room and the, I don't know what you call it, the nightclub, whatever, huh? Right? If I don't get there and get a drink, I'm gonna go mad. मेरे गुरुदेव बताया करते हैं, भौतिकता वाले लोग, कर्मी लोग ये सोचते हैं कि अगर शुक्रवार के रात के दिन अगर मैं नाइट क्लब में नहीं गया कुछ पीने के लिए, शराब पीने के लिए, तो मैं पागल हो जाऊंगा. In America, one club they call it the Thank God It's Friday. अमेरिका में एक क्लब है, उसको कहते हैं Thank God It's Friday. Now I think it's all over now, right? In India, I think I saw also. तो मुझे लगता है ये पूरे विश्व में फैल चुका है, अब भारत में भी आ चुका है. Right? Thank God it's Friday. उसका नाम है नाइट We क्लब. can go get some drink, Thank God It's Friday कि हाँ मैं वहाँ जाके कुछ पीने को मिलेगा. So Gurudev said, if we're spiritually advancing, we'll think, if I don't do sadhu sangha and hear Hari-katha, Krishna-katha, I'm gonna go mad. तो मेरे गुरुदेव बताया करते थे, अगर आप आध्यात्मिक रूप से अगर आपको ये संग नहीं मिल पा रहा है, साधु संग हो, तो जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं वो कहेंगे मैं पागल हो जाऊंगा. Because without the mercy of sadhu guru Vaishnava, we cannot get the association of Krishna. तो बिना साधु गुरु वैष्णव का संग प्राप्त किए बिना हम कृष्ण का संग नहीं प्राप्त कर सकते. Prabhupada was saying the other night, we have no spiritual qualification. प्रभुपाद दूसरी रात बता रहे थे, हमारे पास कोई आध्यात्मिक योग्यता नहीं है. So much tamoguna is there. बहुत सारा तमोगुण है. No sufficient sukriti is there. कोई पर्याप्त सुकृति नहीं है. No sufficient piety is there. पर्याप्त पुण्य कर्म नहीं है. Because just unlimited sinful desires, sinful reactions are there within the heart and consciousness. क्योंकि असीमित पाप की इच्छाएं, पाप कर्म की प्रतिक्रिया है हमारे हृदय के अंदर. So we have no real attraction and attachment in Krishna consciousness. तो हमारा कोई असल आकर्षण या आसक्ति नहीं है कृष्ण भावनामृत. So really, we just need causeless mercy. असल में हमें अहेतु की कृपा चाहिए. What can we really contribute if we're in such bad consciousness? क्या हम योगदान कर पाएंगे अगर हम इस तरह की बुरी चेतना में हैं? We're hearing about Krishna becomes no taste, no interest. हम कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं लेकिन हमें कोई स्वाद नहीं, कोई रुचि नहीं. Because so much materially absorbed, so much materialistic desire is there. क्योंकि इतने सारे भौतिकतावाद में हम डूबे हुए हैं, भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर इतनी So सारी हैं. what is the strength of our desire to want to associate and hear from Krishna? तो हमारी इच्छा में कितनी शक्ति है कि हम कृष्ण के साथ श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं. Where is this greed to want to associate with Krishna and his devotees? कहाँ हमारे पास ये लोभ है कृष्ण के साथ संग करना और उनके भक्तों के साथ संग करने की. Where is the extreme inquisitiveness to understand how to understand the absolute truth? कहाँ ये पूर्ण रूप से व्याकुलता है, ये जिज्ञासा है कि मैं परम सत्य को जानना चाहता हूँ. Where will that come from? ये कहाँ से आएगा? Where will that spiritual desire and the strength of that spiritual desire, how will that be increased? कहाँ से वो आध्यात्मिक इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा शक्ति प्राप्त की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है? So without associating with our spiritual master, sadhu, guru, Vaishnava, devotees of the Lord, there's no way to purify the material desires, the strength of the material desires. तो बिना साधु गुरु वैष्णव के साथ संग किए बिना, आध्यात्मिक गुरु से संग किए बिना कोई तरीका नहीं है अपनी भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करने का. And there's no way to change our desire to spiritual, that it's in such a real way, spiritual desire, not just like, oh, it would be nice to be spiritual. और हमारे पास कोई अन्य मौका नहीं है कि हम अपने इस भौतिक इच्छा को परिवर्तित कर सके, करके आध्यात्मिक इच्छा बना सके. मतलब असल आध्यात्मिक इच्छा ऐसा नहीं कि बस कोई जिज्ञासा थोड़ी मोड़ी है. Or I'm curious about spiritual life. और या मैं बस थोड़ा जिज्ञासु हूँ आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने की. Rather, it should be I have to understand spiritual life. हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें जानना ही होगा कि आध्यात्मिक जीवन क्या है. Right? So where will that desire increase? How will that desire increase? On our own, it will not increase.
तो ये इच्छा कहाँ से बढ़ सकेगी? हमारे स्वयं के प्रयास से ये बढ़ नहीं सकती। So it says, bona fide guru, he can make Krishna appear before us. ऐसा बताया जाता है प्रमाणी गुरु कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं हमारे सामने। They can purify heart and consciousness and make Krishna appear even within our own heart and consciousness. तो हमारे हृदय और हमारी चेतना को शुद्ध करके हमारे हृदय और चेतना में कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं। By his causeless mercy. अपने अहेतु की कृपा से। And he knows if Krishna doesn't shower that causeless mercy on them, और वो जानते हैं अगर कृष्ण अपने अहेतु की कृपा नहीं बरसाएंगे इनके if he ऊपर, doesn't act as patita pavana, अगर वो पतित पावन के रूप में कार्य नहीं करेंगे, then how will the conditioned souls who have no standing, no qualification, how will they be delivered? तो कैसे ये बद्ध जीवात्मा जिनका कोई योग्यता नहीं है, कोई स्तर नहीं है, कैसे वो मुक्त हो पाएंगे? So Goswami means that they're thinking about how others will be benefited, how others can be delivered. तो गोष्ठी ये सोचते हैं कैसे अन्य लोगों को मुक्त किया जा सकता है, कैसे बाकी लोगों की मदद की जा सकती है। Not just thinking about own self. बस हमेशा स्वयं के बारे में ना सोचते रहना। So Krishna says, those who do like that, they become most dear to me. तो कृष्ण बताते हैं जो ऐसा करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हो जाते हैं। Because they're taking the burden, they're taking the trouble to take a risk to confront people in their ignorance and false ego. क्योंकि वो ये खतरा उठा रहे हैं, ये बोझ उठा रहे हैं, ये जोखिम उठा रहे हैं, ये और परेशानी ले रहे हैं कि ऐसे ज्ञान में व्यक्तियों को जाके उनको सच उनको बताएं। In the midst of all of their material attachments, इतने सारे भौतिक आसक्तियों में जो that they're not even thinking about wanting to give up, जो सोच भी नहीं रहे उसको त्याग करने का, and confronting them and challenging them and provoking them to think about these topics. और उनको चुनौती देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो इस तरह के विषयों के बारे में सोच सके, विचार कर सकें। And when the people have a big false ego and so much pride and attachment, they become very angry. They can become very furious with you. और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक रूप से आसक्त हैं, जिनकी बहुत सारी इस तरह, वो ऐसे व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं। Why are you disturbing me? क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? Krishna says, better don't approach them. कृष्ण कहते हैं बेहतर है कि उन लोगों के पास ना People who are जाए। too materialistic, too materially attached, and big false ego, pride, better don't disturb them. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद में है, बहुत सारी भौतिक रूप से आसक्तियां हैं, बहुत दम्भ है, गर्व है उसको, तो बेहतर है उन लोगों को कुछ नहीं बताया जाए। It's even said, you're preaching to faithless people, this is aparad. ऐसा भी ये भी कहा जाता है ऐसे जो अश्रद्धावान व्यक्ति हैं, इनको प्रचार करना एक तरह का अपराध है। Prabhupada says that, but the devotees, they're taking, even though Krishna says like this, they're taking a risk anyway. लेकिन प्रभुपाद बताते हैं जो भक्त हैं वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी वो ये खतरा उठाते हैं। To see if somehow or other they can shower Krishna's causeless mercy on them, because he knows the Lord wants to deliver them. क्योंकि वो किसी तरह से भगवान के अहेतु की कृपा उनको दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान इनको ये कृपा देना चाहते हैं। And Prabhupada said on Jaladutta when he was coming over, right? How are these people in the Tamagun? How are they going to understand the Srimad Bhagavatam? तो प्रभुपाद जब जलदूत से सफर कर रहे थे तो वो ये बात सोच रहे थे कैसे ये व्यक्ति जो तमोगुण में ये श्रीमद् भागवतम कैसे समझ पाएंगे। This is fourth dimension, transcendental topics. ये चतुर्थ आयाम का दिव्य विषय है। These people are in the lowest mode of Tamagun. ये सबसे नीचे तमोगुण के भाव में है। We were reading the other night, Krishna says those people who are in lower modes of material nature, they cannot understand anything about the transcendental realm. हम दूसरे दिन पढ़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे जो तमोगुण या उससे भी नीचे हैं वो दिव्य स्तर की चीजों को, विषयों को नहीं समझ सकते हैं। Even you come to Brahman, the best you can do is maybe understand, the Brahmana is the Brahman. That's it. You cannot understand the personal aspect Bhagavan. तो हो सकता है ब्रह्मांड तक पहुंच सके, लेकिन आप भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप परमात्मा रूप को नहीं समझ पाएंगे। So Krishna, his holy names, his devotees, his dham, his paraphernalia, everything to do with Krishna, that's on fourth dimensional transcendental platform. तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, उनके भक्त और उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो चतुर्थ आयाम में दिव्य स्तर की चीजें हैं। So if all we know is our body and our mind and our bodily relations in the tamagun, how are we going to understand about these topics? तो अगर हम अपने सिर्फ शरीर, मन और शरीर के स्तर के संबंधों को जानते हैं तो कैसे हम इस दिव्य स्तर की चीजों को समझ पाएंगे? So Prabhupada was writing like this on Jaladutta. तो प्रभुपाद इस तरह से लिख रहे थे जलदूत में। And then he said, anyway, my Lord, you put these people in Maya. लेकिन प्रभु उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने इन लोगों को माया में डाला है। Because they wanted to forget, you let them forget. क्योंकि वो भूलना चाहते थे तो आपने उनको भुलवा दिया। So you can also get them out of Maya. लेकिन आप उनको माया से निकाल भी सकते हैं।
according to your will and your desire. आपकी इच्छा के आधार पे। So Prabhupada is saying, if you empower my words, प्रभुपाद ने कहा अगर आप मेरे शब्दों में शक्ति that डालेंगे, somehow or other this can penetrate all of this material contamination and coverings of the soul. तो किसी तरह से ये सारे भौतिक आवरण और गंदगी को चीरते हुए आत्मा तक पहुंच पाएगा। And they can somehow hear your words and your instructions. तो वो किसी तरह से आपके शब्दों या आपके निर्देशों को सुन पाएंगे। This will purify them. ये उनको शुद्ध करेगा। Then they'll be able by your mercy to become delivered. तो फिर आपकी कृपा से वो मुक्त हो पाएंगे। So Prabhupada is saying, Krishna, you can make me a successor or a failure as you like. प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा आप मुझे सफल बना सकते हैं या असफल बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। Completely depending on Krishna's mercy and his potency in order to be able to purify and convince a conditioned soul. वो पूरी तरह से निर्भर हैं कृष्ण की कृपा में, कृष्ण की शक्ति में कि वो बद्ध जीवात्मा को आश्वस्त कर सके, उनको सशक्त कर सके। That's why Prabhupada said, unless one is empowered by Mahaprabhu, he cannot be a preacher. इसलिए प्रभुपाद ने बताया अगर कोई महाप्रभु के द्वारा सशक्तिकरण प्राप्त नहीं किया हो वो प्रचारक नहीं बन सकता। Because Krishna will not manifest there. क्योंकि कृष्ण वहाँ प्रकट नहीं होंगे। Even he speaks some philosophy, it will have no potency. अगर हो सकता है वो किसी सिद्धांत के बारे में बात भी करे लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। It'll just be, what is it? Blank fire. Blank fire and double L, what is it? FFLLL. FF, double F, triple L. तो फिर ऐसा होगा बस डबल एफ ट्रिपल एल। That'll make you greedy for spiritual life, right? ये आपको Double F, triple L. लोभी बना देगा डबल एफ ट्रिपल एल। No offense. I'm just saying, no offense. कोई अपराध नहीं। So you have to be empowered. तो आपको सशक्तिकरण प्राप्त करना And you have to have heard from Krishna in Krishna Parampara. और आपको कृष्ण से सुनना होगा कृष्ण And you परंपरा। must understand and have unflinching faith in Guru Sadhu and Shastra. और आपको अवश्य समझना होगा, अटूट श्रद्धा रखनी होगी गुरु साधु शास्त्र में। It says otherwise, if you're just trying to do mental speculation, this what is ascending process. और अगर आप अपने मनोधर्म से इस आरोह के पंथ को It's अपनाना चाह all रहे हैं, theoretical. ये पूरी तरह से मौखिक है। But when you get from Krishna Parampara to Guru Sadhu Shastra, that's a factual, scientific information. लेकिन आप कृष्ण परंपरा गुरु से प्राप्त करते हैं तो ये वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है। So unless you are representing in a very real way Krishna's Parampara, Krishna will not manifest in your discussion. तो अगर आप असल प्रतिनिधि नहीं हैं कृष्ण परंपरा के तो कृष्ण आपके संग में प्रकट नहीं होंगे। It will not impress on anybody, it will not change anybody's consciousness or convince anybody. ये किसी के अंदर प्रभाव नहीं डालता है, किसी की चेतना को शुद्ध नहीं कर पाएगा, उनको आश्वस्त नहीं कर पाएगा। Because it's just theoretical. क्योंकि ये मौखिक है। So it must be factually, scientifically delivered and realized. तो इसको तथ्य रूप में वैज्ञानिक रूप से प्राप्त करना होगा और साक्षात्कार प्राप्त करना होगा इसके अंदर। Tattva Vijnana means scientific, factual realization. तत्व विज्ञान प्राप्त करना होगा। So without Krishna's Parampara, how can anyone get that type of result? It's impossible. तो बिना कृष्ण परंपरा के कोई कैसे ऐसा फल प्राप्त कर सकता है? So not everybody can be a preacher. तो हर कोई प्रचारक नहीं बन सकता। Everyone wants to be a preacher. हर कोई प्रचारक बनना चाहता है। Because everybody has an opinion. क्योंकि सभी का कोई ना कोई विचार है। And we have high impression of ourselves that we know something. हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ जानते हैं। So like Adam, he gets someone in the corner, he's just like, I'm gonna preach to you, जैसे एडम है, ये किसी को कोने में ले जाते हैं और कहते हैं मैं आपको कुछ प्रचार करूंगा। And then you're like, okay, I'm just humbly avoiding your association. कहते हैं मैं तो बस विनम्र रूप से आपके संग को किसी तरह He's देखा करने का chasing प्रयास you कर रहा down, saying, touch Trinu, hear from me. और वो आपका पीछा करते हुए आपके पास जाते हैं, कहते हैं तच सुनो, मुझसे सुनो। Right. So Prabhupada says, if your preaching cannot even purify yourself, प्रभुपाद बताते हैं अगर आपका प्रचार आपकी चेतना को भी शुद्ध नहीं कर पा रहा है, if your preaching cannot even convince yourself, अगर आपका प्रचार आपको खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रहा है, how will it convince anybody else? तो कैसे ये किसी और को आश्वस्त How will करेगा? it purify anybody else? कैसे ये किसी और को शुद्ध करेगा? So if Krishna manifests, just you'll see Krishna's association, he'll purify heart and consciousness. तो कृष्ण Undoubtedly. तो कृष्ण प्रकट होंगे तो आप देख पाएंगे कृष्ण के उपस्थिति से आपकी हृदय और चेतना में प्रभाव दिखेगा। By Krishna's causeless mercy. कृष्ण क्या है तो की कृपा से।
And then you get perfect, factual, scientific knowledge from Krishna through Krishna Parampara, according to Guru Sadhu Shastra. तो आपको कृष्ण का ये तत्व विज्ञान प्राप्त होगा कृष्ण परंपरा से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। If we don't hear that way, then it's just a mental speculation. अगर हम इस तरीके से सुनते नहीं हैं तो ये बस हमारा Just मनोधर्म है। guessing, maybe it's like this, maybe it's like that. बस अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है ये ऐसा है, हो सकता है वैसा है। Whatever our stupid mind thinks it is, oh, it must be like that. Why? Because my mind said it's like this. जो भी हमारा बेवकूफ मन सोचता है ये अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन ऐसा I सोच रहा है। feel it in my heart. और मैं अपने हृदय में महसूस कर रहा हूँ पूरी तरह से। Pounding the heart. अपना So छाती पीट कर emotional, sentimental appeal. बहुत भावनात्मक और भावपूर्ण प्रयास That's करते not going हैं। to convince intelligent person. ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति को आश्वस्त नहीं कर Only पाएगा। Krishna can convince intelligent person. सिर्फ कृष्ण एक बुद्धिमान व्यक्ति को आश्वस्त कर सकते So if हैं। we don't hear Krishna, Krishna Parampara, Krishna will not manifest there. अगर हम कृष्ण परंपरा को नहीं सुन रहे हैं, कृष्ण वहाँ प्रकट नहीं होते हैं। So what is the value of the association? तो उस संघ का क्या अर्थ है? So instead of getting, Krishna's association, you get Adam's mind's association. तो कृष्ण का संग प्राप्त करने के बजाय आपको एडम के मन का संग प्राप्त होगा। He can't make Krishna appear. वो कृष्ण को प्रकट नहीं कर सकते। So he says, well, I couldn't bring Krishna, but I'm here, वो कहते हैं हाँ, मैं कृष्ण को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ प्रकट हो And, सकता हूँ। I'm a very important person. और मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। So touch Trinu. Just hear from me. मुझसे सुनो। Right? And then you're like, but we're looking for Krishna, Bhakti Adam. We're not interested in Bhakti Adam from England. और वो कहते हैं नहीं, हमको कृष्ण में रुचि है, हमको भक्त एडम इंग्लैंड के हैं, उनसे हमें कोई रुचि नहीं है। We're not here to try to satisfy your false ego. हम यहाँ आपके मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं To आए make you feel good about yourself as a preacher. ताकि आप अपने आप को प्रचारक के रूप में अच्छा महसूस कर पाएं। We're not here to pump you up. हम यहाँ आपको फुलाने के लिए नहीं हैं। That's not our service. ये हमारी सेवा नहीं है। We're supposed to hear for the pleasure of Guru Krishna. हमें सुनना चाहिए गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। So without Krishna manifesting, there's nothing spiritual. अगर कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं, वहाँ कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। It's just a bunch of false egos imagining some esoteric spiritual topics like, wow, we're so special, isn't it? But Nothing spiritual. कुछ झुंड है मिथ्या अहंकार वाले लोगों का और वो बस कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं किसी आध्यात्मिक चीज के विषय में। यह आध्यात्मिक नहीं है। It's just like a competition of the false egos. ये बस एक प्रतियोगिता होगी मिथ्या अहंकार वाले लोगों की। Who's a better mental speculator? कौन बेहतर मनोधर्म करने वाला है? Who's more advanced? कौन ज्यादा उन्नत है? It becomes competition of the false egos. वहाँ मिथ्या अहंकार का प्रतियोगिता शुरू होता है। Quoting shlokas, श्लोका बोलते हैं वहाँ, but who's more advanced? लेकिन कौन ज्यादा उन्नत है? They obeisance. प्रणाम करो, Demanding respect, सम्मान की मांग करना, showing off scholarship, अपनी विद्वता दिखाना, wanting to be recognized. चाहते हैं लोग उनको जाने। This is materialistic. ये भौतिक है, Nothing spiritual about that. इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। That's what jnanis do. यही ज्ञानी करते हैं। We're after bhakti. हम भक्ति के पीछे हैं। Krishna prem bhakti. कृष्ण प्रेम भक्ति। You don't have any material qualification, it doesn't even matter. आपका कोई हो सकता है बहुत योग्यता ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। If you perfectly hear perfect knowledge from perfect source, then your knowledge will be perfect. अगर आप पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से, तो आपका ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा। Factual and scientific. तत्व विज्ञान। No one can defeat that. जिसको कोई हरा नहीं सकता। Otherwise, it's all sentimental, artificial, speculative. वरना ये सब भावपूर्ण होगा और बनावटी होगा। And then when you discuss on that false ego platform, it's just a competition of the wannabes. तो वहाँ पर मिथ्या अहंकार वाले लोगों की प्रतियोगिता होगी और सब स्वयं को स्थापित करना चाहेंगे। साधु गुरु Vaishnava wannabes. साधु गुरु वैष्णव जो बनना चाहते हैं, but not quite there yet. लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। So what is the value of that hearing? तो उस महाश्रवण का क्या अर्थ है? Only Krishna Parampara, Guru Sadhu Shastra, that is only satsanga, sadhu sanga. सिर्फ कृष्ण परंपरा, गुरु साधु शास्त्र, सिर्फ वही सत्संग है, साधु संग। Every other thing that we hear is asatsanga.
और हर वो चीज जो इसके अलावा हम सुनते हैं वो है असत्संग, Because it's coming from bodily platform, mental platform, false ego platform. क्योंकि ये शरीर के स्तर से, मन के स्तर से या मिथ्या अहंकार के स्तर से आता है। The vibration is all materialistic vibration. वो ध्वनि तरंग हमें सारा भौतिक ध्वनि तरंग होता है, Because Krishna not manifesting. क्योंकि कृष्ण वहाँ प्रकट नहीं होते। So what is the value of that association and that hearing? तो उस संग का, उस श्रवण का क्या अर्थ है? If the topic and the vibration is purely materialistic, it's counter to development of bhakti. अगर विषय और वहाँ शब्द ध्वनि पूरी तरह से भौतिक है, तो असल में ये आध्यात्मिक जीवन के पूरी तरह खिलाफ है। Rather than purifying and clarifying, और आपको शुद्ध करने के बजाय, स्पष्ट करने के बजाय, it will contaminate and confuse you. ये आपको अशुद्ध बनाएगा और आपको और दूषित करेगा, भ्रमित करेगा। Instead of getting rid of your doubts, it will increase your doubts. आपके संदेहों से मुक्ति पाने के बजाय आपके संदेह और बढ़ने लगेंगे। Because that material association, material sound vibration, this is just Maya entering into you and filling you with doubts. क्योंकि ये भौतिक संग और इस तरह का भौतिकतावादी शब्द ध्वनि ये माया से आता है और ये आपके कानों के अंदर प्रवेश करके आपको दूषित करेगा। All material people, material consciousness means so many doubts. सारे भौतिक लोग, भौतिक चेतना में, इसका मतलब बहुत सारे संदेह हैं उनके अंदर। So if we associate in here, then only you pick up their doubts. तो अगर आप उनसे संग करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो आप सिर्फ उनके संदेह को प्राप्त कर पाएंगे। But if we associate in here Krishna, Krishna Parampara, Guru Sadhu and Shastra, as it is, Prabhupada said, तो अगर हम कृष्ण कृष्ण परंपरा, गुरु साधु शास्त्र को यथारूप में सुनेंगे, which is factual information, जो तत्व विज्ञान है, scientific information, वैज्ञानिक जानकारी है, then your knowledge will be perfect. तो आपका ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा। And then if you understand it by their mercy, और अगर आप समझ पाए उनकी कृपा से, then you'll be able to speak it nicely. तो आप उसको बोल पाएंगे बहुत अच्छे तरीके Prabhupada से। said, who's a very good speaker, it's because they were a very nice hearer. वो बताते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, असल में वो बहुत अच्छे श्रवण उन्होंने किया है। If you don't hear nicely, you cannot speak nicely. अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, तो आप अच्छे से बोल नहीं सकते। That's why everyone cannot present the Guru Sadhu Shastra properly. इसलिए हर कोई गुरु साधु शास्त्र सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता, Because they don't understand it. They didn't hear properly क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने सही तरीके से सुना नहीं है from proper source. सही स्रोत से। I remember before I met my spiritual master, I was reading Prabhupada's books every day, 2-3 hours a day. मुझे याद है मेरे आध्यात्मिक गुरु से मिलने से पहले मैं श्रील प्रभुपाद की किताबें 2-3 घंटे दिन में पढ़ा करता For था। many years, that was part of my sadhana. कई सालों तक ये मेरे साधना का एक भाग था। And I like to read, I like to study. और मुझे पढ़ना, अध्ययन करना अच्छा लगता So I है, also very much appreciated that. तो मैंने उसकी भी बहुत सराहना की थी। But then when I heard from one who really knows what's in the Shastra, then I realized, wow, I was totally misunderstanding that point. और जब मैंने असल में इस ऐसे व्यक्ति से सुना जो जानते हैं शास्त्र के अंदर क्या है, तो मुझे बिल्कुल ही अलग अनुभव प्राप्त हुआ। So when you come to some conclusion materialistically, every time you read that, you'll see the same thing that you previously saw. You'll maintain that misconception. तो अगर आपका कोई भौतिक समझ है, भौतिक रूप से आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं किसी चीज को पढ़ के, तो आप जितनी बार भी उसको पढ़ लें, आपको हर बार वही निष्कर्ष मिल पाएगा। And until you hear the truth on that topic, on that tattva, that's only then you can see, oh, I was misunderstanding that point. और जब तक आप सत्य ना सुन ले, उस तत्व को ना सुन ले, उस जिस चीज के बारे में आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक आपका ये गलतफहमी दूर नहीं होगा अपने से। So that was very amazing revelation. तो ये बहुत ही अद्भुत मेरे सामने प्रकट हुआ ये चीज। That means my studying and reading and thinking I'm understanding all of these things, many of these things I was misunderstanding it. और जो भी मैं सोच रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें असल में मैंने गलत तरीके से समझ लिया था। And then I remember thinking, and the points that I thought I understood, और मैंने जो सोचा, जिन बातों को मैं समझ it पाया was था, very theoretical. वो असल में बहुत मौखिक And था। it was very shallow. I couldn't explain around it. और वो बहुत, उसके मेरी जानकारी बहुत कम गहराई तक थी और मैं उसको अच्छे तरीके से व्याख्या I'm भी नहीं not कर सकता conversant, realized with that information. और मुझे उस जानकारी का साक्षात्कार नहीं था। So it was either theoretical, not fully, conversant, or it was misunderstood just by academic, scholarly approach. ये सिर्फ और सिर्फ कम गहराई वाला मेरा साक्षात्कार होता था, बहुत मौखिक होता था, या फिर मेरी तरह से पूरी गलतफहमी होती थी वो। So when you hear absolute knowledge from perfect source, then you can realize the inferior
process of trying to understand it by scholarship or academic approach. तो अगर आप परम सत्य सुनेंगे सही स्रोत से, तब आप जान पाएंगे कि ये कितना निम्न तरीका है अपने स्वयं के विद्वता से पहुंच पाने का, शास्त्रों को जानने का प्रयास Just like करना। Shukadeva Goswami, he was perfect in this Brahmanandi, right? तो जैसे सुखदेव गोस्वामी वो पूर्ण रूप से थे ब्रह्मानंदी स्तर पे, And he was topmost. और सबसे ऊंचे स्तर पे थे। But when he heard Srimad Bhagavatam from his father, then he went to bhakti. लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना अपने पिता से, तो वो भक्ति में चले गए। Instead of this Brahman realization, now he went to bhakti platform. तो इस ब्रह्मांड साक्षात्कार से ऊपर जाकर वो भक्ति के स्तर पे आ गए। Guru Krishna. गुरु कृष्ण की कृपा Then से। he could look back on this Brahman process, as a Brahmanandi process, and say, oh, this is something less, and now it's inferior. और जब वो उस स्तर से उन्होंने ब्रह्मानंदी के स्तर को देखा, उस प्रक्रिया को देखा, तो वो समझ पाए असल में निम्न का स्तर है ब्रह्मानंदी। So unless you get the topmost understanding and realization, you cannot really have the intelligence and the vision and the understanding how everything else is inferior to that. तो अगर आपको इस तरह का सबसे ऊंचा साक्षात्कार, ऊंची बुद्धि, ऊंचा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक आप बाकी नीचे की चीजों को बुद्धि आपको नहीं मिल पाएगी समझने के लिए कैसे वो उस सारी चीजों से निम्न है। It's just like if you hear many different devotees preaching. जैसे आप बहुत सारे भक्तों को सुन रहे हो, प्रचार कर रहे हैं, It's more or less the same. तो कम या ज्यादा सब एक ही बात कहते हैं। Until you meet, Premi Bhakta, Shuddha Bhakta, one who's authorized in a Parampara, then you see what is the difference in that content and effect of that hearing. It's completely different. जब तक आप ऐसे किसी शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त से मिलकर उनके साथ श्रवण न करें और उनके साथ श्रवण करके अपने अंदर जो प्रभाव देखें और अपने अंदर जो लाभ देख पाएं, तब तक आप इसका भेद नहीं पता लगा पाएंगे। Even people say, oh, this is food for your soul, and it's like, oh, all right. यहाँ तक कि लोग ये भी कहेंगे आपकी आत्मा के लिए भोजन है, कहेंगे ठीक है, अच्छा है। I'm trying to understand how that was food for my soul. He's telling it's food for your soul. Okay, all right. I'm not opposed, just not tasting. तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये आत्मा के लिए भोजन है, तो ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये आत्मा का भोजन है, लेकिन अभी तक मुझे स्वाद नहीं मिल रहा आत्मा के भोजन का। Then when I met my spiritual master, then he's speaking. Then I started, once I got purified and could actually enter in, I could actually understand this is a pure nectar. It's a food for my soul. No one else could speak like that. तो जब तक मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला, जब उनसे सुनना श्रवण करना शुरू किया और जब मैंने धीरे-धीरे शुद्ध हुआ, तब मुझे वो अमृत मिल पाया, आत्मा के लिए भोजन मिल पाया, तब मैं भेद लगा पाया कि ये असल में आत्मा का भोजन है। Now you can see the difference. तब आप भेद देख पाएंगे। So just studying scholarly, academically, just reading and trying to understand it, until you hear from someone who actually understands it, you can't see the difference. तो अगर आप इस तरह से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी शैक्षणिक विद्वता का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना सुने जिन्होंने सारे चीज का साक्षात्कार प्राप्त किया है, आप भेद पता नहीं लगा पाएंगे। Because we're reading it with material mind, intelligence and senses. क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं अपने भौतिक मन, बुद्धि और इंद्रियों से। So how far can we understand of it on a transcendental platform? तो कितने दूर तक हम समझ पाएंगे इसको दिव्य स्तर की चीज को? If everything we're using is material, how can then we think that it's going to come to a transcendental understanding? तो अगर कैसे हम सारी भौतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके कैसे हम किसी आध्यात्मिक निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं? It's all material instruments. ये सारे भौतिक उपकरणों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। So first the intelligence, mind and senses have to become spiritualized. तो पहले मन, बुद्धि और हमारी इंद्रिय उसको आध्यात्मिक बनाना होगा। Purified and spiritualized. उसको शुद्ध करके आध्यात्मिक बनाना होगा। Just like Sanjay said, because I got special mercy from my guru, he purified my mind and my intelligence, my senses. जैसे संजय ने कहा, मेरे आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त करके उन्होंने मेरे मन और मेरी बुद्धि और मेरी इंद्रियों को शुद्ध कर दिया। And he did it by constantly speaking Hari-katha, Krishna-katha, Krishna Nam, and that vibration gradually started to purify all of this misconception and material contamination of the mind and consciousness. तो उन्होंने किया निरंतर हरि कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम बोलकर और धीरे-धीरे उसके माध्यम से शुद्धिकरण प्राप्त करके ये धीरे-धीरे उनको शुद्ध करके सही समझ पर लेकर आ पाया और सारे गलत फहमियों को दूर कर पाया। Then once mind, senses, consciousness is purified, spiritualized, then you're able to hear तो जब आप perfect knowledge from perfect source.
आपका मन और चेतना और इंद्रिय शुद्धिकरण प्राप्त कर लिया, आपने आध्यात्मिक हो गया, तब आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से श्रवण कर पाएंगे। Now, by their mercy, you'll understand it. अब उनकी कृपा से आप समझ पाएंगे Automatically. अपने आप ही। We were saying the other day, it's, Krishna directly telling you about himself. हम दूसरे दिन बात कर रहे थे, कृष्णा सीधे सीधे बता रहे हैं आपको And स्वयं के instead बारे of में। hearing Krishna directly telling us about himself, we're sitting there speculating, I wonder what Krishna is all about. और कृष्णा जब हमें सीधे सीधे स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में, तो हम अपने मन से बस चिंता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्णा कौन है, कृष्णा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। By Krishna directly telling, कृष्णा हमें सीधे सीधे बता and रहे we're हैं not listening to that, और हम उसको ना सुन के, and we're in our mind thinking, I wonder what is Krishna consciousness all about. और बस हम अपने मन में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कृष्णा भावनामृत क्या है, कृष्णा क्या है, And he's trying to directly tell us, और वो हमें सीधे सीधे बताने का प्रयास कर रहे we हैं, cannot hear it लेकिन हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं because too much false ego and too much mental platform, material mental platform. क्योंकि बहुत ज्यादा मिथ्या अहंकार और मानसिक स्तर पे हैं। So that has to become purified. तो इसको शुद्ध करने की जरूरत है। And without Krishna manifesting through his representative in the Shastra, how is that contamination going to get purified in the mind, intelligence and senses? तो अगर कृष्ण प्रकट नहीं हो उस कथा के माध्यम से, उस अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, तो कैसे मन बुद्धि शुद्ध हो पाएगी और उसको आध्यात्मिक बनाया जा सकेगा? I remember my Gurudev would speak on one point and he would speak he'd say the same thing 5 times in a row. और मुझे याद है जब मेरे आध्यात्मिक गुरु कथा करते थे तो 5 तरीके से एक ही सत्य को बार-बार बताते थे। And it would just sound a little bit different, but it was actually the same exact point. और सुनने में अलग लगता था, लेकिन असल में वो थोड़ा अलग लगता था, लेकिन असल में एक ही बात को Trying to साबित करना purify चाहता us. था। वो हमें शुद्ध करने का And प्रयास try to give different ways of looking at that same truth to get you to understand that point, because he's expert teacher. और वो हमें सही दृष्टि देने का प्रयास कर रहे थे अलग-अलग तरीके से एक ही बात को समझने के लिए, क्योंकि वो एक निपुण शिक्षक थे। So, without the purification, due the mercy of Guru Krishna, how we're going to understand? Even you read the Shastra, 24 hours a day you won't understand it. तो बिना कृपा के, बिना शुद्धिकरण के, गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त किए बिना हम 24 घंटे शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन हम समझ नहीं I पाएंगे। just have to study more. और मुझे और ज्यादा पढ़ने की You जरूरत है। could study around the clock and never understand it. आप पूरे 24 घंटे पढ़ सकते हैं उसको You समझने could के लिए। chant around the clock and never understand holy name. आप 24 घंटे जप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम समझ नहीं पाएंगे। So my Gurudev explained it. You have to get the right of hearing. तो मेरे गुरुदेव बताया करते थे आपको श्रवण का अधिकार प्राप्त करना होगा। It's a gift. ये उपहार है। It's not that you say, okay, I'm going to hear. ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हाँ मैं जाके सुनूंगा। You can desire to want to hear. आप इच्छा कर सकते हैं कि आप सुनना चाहते हैं, But without mercy of Guru Krishna, you won't actually be able to hear it properly. लेकिन बिना गुरु कृष्ण की कृपा के आप असल में सही तरीके से सुन नहीं पाएंगे। We'll just be hearing what material ear and material mind, material intelligence. We'll just be somehow trying to understand it all still on material platform. तो हम अपने भौतिक कानों से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक चेतना से सुनने का, श्रवण करने का प्रयास करेंगे, हम उसको दिव्य स्तर पे नहीं समझ पाएंगे। So it's not the submissive our reception. तो ये विनीत भाव से श्रवण नहीं हुआ। We're taking perfect knowledge and we're twisting it around on a material platform and misunderstanding it. तो हम इस तरह का दिव्य पूर्ण ज्ञान भौतिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको गलत समझ बैठे हैं। That's why it says if you don't know anything, तो इसलिए ये भी कहा जाता है अगर आप कुछ भी ना जानते but हैं, you're very simple-hearted, very pure-hearted, लेकिन आप एक बहुत सरल हृदय और शुद्ध हृदय वाले हैं not complex person. और जटिल व्यक्ति नहीं है, If you hear perfect knowledge from perfect source, by their mercy you could immediately understand it. अगर आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से श्रवण करेंगे तो तुरंत ही आप उसको समझ सकते हैं। So if you have very good intelligence and you're really, really simple, pure-hearted, this is a very nice combination. तो अगर आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है और आप बहुत सरल हृदय वाले हैं तो ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है। Really nice combo. बहुत ही अच्छा मिश्रण है ये। Any questions or points कोई सवाल, कोई बिंदु on anything? किसी भी विषय में? Deva, what do you think? देवा आप क्या You're a सोचते हैं? big scholar, right? आप बड़े विद्वान हैं। Come on. चलिए, He's got more books than luggage. All of his luggage is books. इनके पास सामान से ज्यादा किताबें हैं, इनका जितना भी सामान है ज्यादातर उसमें किताबें हैं। He loves books. इनको किताबों से बहुत प्रेम है। I also love books. मुझे भी किताबों से I used प्रेम to है। collect all the books. मैं सारी किताब जमा करता था।
Whenever I was distributing books in different temples, जब भी मैं अलग-अलग मंदिरों में I would go in the book room and I would try to find some special books. मैं जो है किताब के घर में जाता था और किसी तरह का विशेष किताब ढूंढने का प्रयास करता था। Old Bhagavatam, original Bhagavatams. तो मैंने सारे पुराने भागवतम, ओरिजिनल भागवतम जमा करने का प्रयास I किया। wanted Prabhupada's original Bhagavatam. मुझे प्रभुपाद का सारा मूल भागवतम चाहिए था। And I would just go and I'd just find like, oh, I got this canto, you know. तो मैं जाके ढूंढता था और मैं बोलता था वाह मुझे ये जो पुराना स्कंद प्राप्त हो गया It संस्करण। became like collector's item, you know. तो मैं इस तरह से सामान चीजें जमा करता था। I was very greedy for that. As soon as I went in the book room in another temple, I looked for that book, you know. तो मैं बहुत लोभी था। जैसे ही किसी नए मंदिर में मैं जाता था, मैं किताब के घर में जाके कुछ विशेष किताब हमेशा ढूंढने का प्रयास करता था। So at least it's spiritual books, you know. कम से कम ये आध्यात्मिक किताबें थी। And I was also reading them. और मैं उनको पढ़ता भी था। I'm really trying to study them. और असल में उनको अध्ययन करने का प्रयास करता था। And I saw, okay, how far did that get me? और मैं देख पाया कि मैं कितनी दूर तक पहुंच पाया ये करके। I was collecting knowledge. मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा था। And I was collecting pride. और मैं अहंकार भी इकट्ठा कर रहा था। Because I was thinking, you know, I have some knowledge here. क्योंकि फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे कुछ ज्ञान मिल गया है। Because I'm reading these books, Prabhupada's books, 2-3 hours a day, and most people are not. क्योंकि मैं प्रभुपाद की किताबें 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ और ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं। So naturally, some pride will come to you. तो स्वाभाविक रूप से कुछ दम्भ आपको हो जाएगा। And then you have some gyan. अब आपके पास कुछ ज्ञान भी है। That's like a dangerous combination. Gyan and pride is a dangerous combination. तो ज्ञान और दम्भ ये बहुत खतरनाक मिश्रण है। Then what comes after that? और उसके बाद क्या आता है? Pratishtha. प्रतिष्ठा। Now we want to be recognized. We want to be respected. चाहते हैं लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें। We want to be glorified. हम हमारा गुणगान करना We चाहते want हैं। to be worshipped. हम अपने आप को पूजा We करवाना want चाहते to हैं। be guru. हम गुरु बनना चाहते हैं। I want to be guru now. अब मैं गुरु बनना चाहता हूँ। It's all materialistic. ये सब भौतिक है। So sometime I'll tell you a good story. मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। Which taught me a very valuable lesson. जिसने मुझे बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। And it puts me in a very humble position, so I hope you don't mind me telling you this story. तो इसने मुझे बहुत विनम्र भी कर दिया, तो मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे जब मैं ये कहानी सुनाऊँ। So this is good for me. और मेरे लिए अच्छा है ये। So one time when I first came to Bhubaneswar, they had a publication, Gurudev publication. They were translating into English. तो मुझे याद है जब मैं पहली बार भुवनेश्वर आया तो वहाँ गुरुदेव का खुद का कुछ प्रकाशन होता था और वो जो है किताबों को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करते थे। So the devotees in publication, they said, oh, he's from America, you know, he has some education, you know, let him, you know, put it in some nice English way that people can understand it. So they asked me, can you try to help, you know? तो उन्होंने मुझे देखा और ये अमेरिका के एक भक्त हैं और ये बहुत अच्छा अंग्रेजी जानते हैं, तो हम इनको मौका देते हैं किस तरह से ये अनुवाद कर दे, हमारे अच्छे तरीके से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दे हमारे ग्रंथों का प्रकाशन। Of course, the British people will say, you know, these Americans, they speak very faulty English, you know. और अवश्य ये जो अंग्रेजी ब्रिटिश लोग ये कहेंगे कि ये अमेरिकन लोग बहुत खराब अंग्रेजी बोलते हैं। But anyway, I thought I'll try. लेकिन मैंने सोचा चलो मैं किसी तरह प्रयास करता हूँ। So all of us, there's like few of us, and then we just wrote what we think Gurudev was saying. We just tried to write it in some kind of like English presentation. तो हम कुछ लोगों ने मिलके उसको जो भी गुरुदेव अपने किताबों में बता रहे थे, हमने उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास किया, हमने उसको लिखा अंग्रेजी भाषा में। And then I wrote like 2 paragraphs. और मैंने 2 पैराग्राफ लिखा। And everyone, you know, different devotees wrote different paragraphs. और अलग-अलग भक्तों ने अलग-अलग पैराग्राफ अनुवाद किया। And then they brought to Gurudev and said, can you see, you know, who's like pretty good at it? और फिर उसको गुरुदेव के पास लेके जाया गया और उनको पूछा गया कि कौन बेहतर है, आप बता सकते हैं। So we're all thinking, okay, let's see what Gurudev says, right? सब सोच रहे चलो देखते हैं गुरुदेव क्या बोलेंगे। So then I looked like where I wrote. तो मैंने देखा जहाँ मैंने लिखा है। And in the red pen it was like square, right? And it had an X through both of the paragraphs, you know? तो किसी लाल स्याही से उसको चारों तरफ से एक वर्ग बनाकर पूरी तरह से काट दिया गया।
पूरे तरह से चौकर बना के काट दिया गया, जो 2 पैराग्राफ मैंने लिखा Everything था else was like little marks here and there, but for my paragraphs it was like a box in red with like a big X, like the whole thing is wrong, you know. बाकी लोगों ने जो अनुवाद किया उसमें कहीं कहीं छोटी छोटी चीजों को गलत दिखाई गया, लेकिन जो मैंने 2 पैराग्राफ अनुवाद किया उसको पूरी तरह लाल स्याही के चारों तरफ घेर के पूरी तरह से काट दिया गया. And I think the other people, they were not even like first language was English. My first language was English. और बाकी लोगों की पहली भाषा तो अंग्रेजी भी नहीं थी, मेरा तो पहली भाषा ही अंग्रेजी है. So you talk about being humbled out. तो अब आप बात कीजिए किस तरह मुझे विनम्र. These guys from Austria or other countries, right? And they got some better marks than me, you know. ये लोग ऑस्ट्रिया और किसी दूसरे देश से थे और उन्होंने ज्यादा बेहतर मुझसे अंक मिल पाए उनको. I got epic fail. मुझे ऐतिहासिक असफलता प्राप्त हुई वहाँ पे. So then I just gave up on the publishing side of things after that. मैंने प्रकाशन की तरफ अपना ध्यान फिर हमेशा के लिए खत्म कर दिया. I thought, okay, I'm not ready yet. I'm not qualified. मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ. So I was trying to do it, so-called academically, grammatically. तो मैंने शैक्षणिक तरीके से और ग्रामर के आधार पे मैंने उसको व्याकरण के आधार पे सही करने का प्रयास किया. I can't even do that with English. तो मैं वो अंग्रेजी के साथ भी मैं सही तरीके से नहीं करता. And now I'm going to take my spiritual master, what he's trying to say, and write it in a perfect English. I can't even do that. I can't even write a regular paragraph in perfect English right now, even what I'm saying. तो मैं स्वयं जो कह रहा हूँ उसको भी मैं सही तरीके से सही अंग्रेजी में सही व्याकरण के साथ व्यक्त नहीं कर सकता. और अब मैं गुरुदेव जो कह रहे हैं उसकी बातों को व्याख्यान करूंगा, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता. I'm sure I'll get the commas wrong and the grammar wrong, right? I'm not very good at these things. तो मैं हो सकता है कॉमा में, व्याकरण में कुछ गलतियां कर सकता हूँ. So now I'm going to use my imperfect, grammar and writing skills to critique and define what my spiritual master is saying. This is outrageous, isn't it? तो मैं अपनी अपूर्ण बुद्धि और अपूर्ण योग्यता ग्रामर की और ये सारी कॉमा की गलतियों को इस्तेमाल करूंगा मेरे गुरुदेव जो बता रहे हैं उसको व्याख्यान करने में. ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है. So that was very humbling. तो बहुत विनम्र हो गया मैं. Very humbling. बहुत विनम्र हो गया. I was like, yes, Gurudev, I got the point, मैंने कहा मैं बात समझ गया गुरुदेव, मैं समझ गया क्या बात है. Looks like I have a lot more hearing and learning to do. लगता है मुझे बहुत ज़्यादा सुनने का और बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है. You're not going to understand what the Guru is saying by just some, materialistic, scholarly, academic approach. आप वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे गुरु क्या कह रहे हैं अपने शैक्षिक और विद्वता के आधार पे. You cannot understand them. आप समझ नहीं सकते in that way. इस तरीके से. Actually, that you're trying to understand them in that way will actually be an obstacle of your being able to understand them. और अगर आप इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो ये असल में एक बहुत बड़ी रुकावट होगी, बाधा होगी कि आप असल तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे. Because that means too much pride, too much false ego, too much materialistic dependence will be there. Those are all disqualification. क्योंकि बहुत सारा दम्भ, बहुत सारा मिथ्या अहंकार होगा इस तरह से समझने के प्रयास से, तो बहुत सारी गलतफहमियां हमारे अंदर होंगी. That's why this modern education, from spiritual point of view, is such an obstacle. तो इसीलिए आधुनिक शिक्षण व्यवस्था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ी अयोग्यता है. Because material qualification makes us puffed up. क्योंकि भौतिक योग्यता हमें अहंकार में डाल देती है. Makes us proud that we हमें know something. बना देती है कि हम कुछ जानते हैं. But Prabhupada saying, we were discussing last night, he said, if you can understand Krishna by Krishna's mercy, प्रभुपाद बता रहे थे पिछली रात, अगर आप कृष्ण को समझ पाएंगे कृष्ण की कृपा से and the Guru's mercy, और गुरु की कृपा से, you will understand everything. आप सब कुछ समझ जाएंगे. In relationship to the absolute truth, in relationship to Krishna. जो भी परम सत्य के साथ संबंधित है, कृष्ण के साथ संबंधित है. You don't even have to endeavor to learn any other thing, because once you understand Krishna, you'll understand everything else. किसी भी आपको अन्य चीज को समझने के लिए प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि गुरु कृष्ण को समझने के बाद आप सब कुछ समझ चुके हैं. That's why Prabhupada said, even with 15 shlokas that I know from Bhagavad Gita, I can defeat the greatest philosophers and PhD scholars in the world. इसलिए प्रभुपाद ने ये भी कहा कि सिर्फ भगवद गीता के 15 श्लोकों को अच्छे तरीके से जान लेने के बाद हम
भौतिक जगत के बड़े-बड़े दार्शनिकों को हराया जा सकता है। Because you have perfect knowledge from perfect source. क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान है पूर्ण स्रोत से। And it's absolute in its nature. और ये परम है अपने स्वभाव से। And it's perfectly factual and scientific. और ये पूर्ण रूप से तथ्यों पे आधार पे है और वैज्ञानिक आधारित है। So what materialistic person who has all contaminated, all inferior type of intelligence and consciousness, they can say nothing. They cannot defeat that. और इस तरह के भौतिक व्यक्ति जिनकी चेतना दूषित है, जिनकी बुद्धि दूषित है, वो कैसे इन सारी चीजों को समझ सकते हैं? Any other questions? कोई अन्य सवाल? I was supposed to ask you, right? मैं आपको पूछने वाला था, मुझे क्षमा कीजिएगा। I get some thing in my head. I'm just like forced to say it. I hope you don't mind. मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, मुझे ऐसा At least I remembered I was supposed to ask you, you know. मुझे बोलना ही होगा, लेकिन कम से कम मुझे इतना याद है कि मैं आपको कुछ पूछने वाला था, आप कुछ बताने वाले थे। So, Hare Krishna, Sir. Good day. Hare Krishna. So, since I can only generate material sound, since I can only generate material sound vibration, you can only generate that. You can only generate material sound vibration. Yourself. In my condition, my position right now. So what? Was there ever a time that you generated spiritual sound vibration? क्या कभी भी आपने आध्यात्मिक शब्द ध्वनि बोली? I don't think so. You're saying right now, but I'm saying, was there ever a time? आप कह रहे हैं कि अभी मैं प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप कभी भी आप प्रकट कर पाए आध्यात्मिक ध्वनि? I'm saying maybe in the future, if I get purified in the future. My brother Bob, I'm too much, aren't I? मेरे भाई बाबू मैं कुछ ज़्यादा ही कहता हूँ। Too much. बहुत ज़्यादा ही कह देता हूँ। So, do you want to generate spiritual sound vibration? तो आप आध्यात्मिक शब्द ध्वनि बोलना चाहते हैं? Do you want to learn how to do that? आप जानना चाहते हैं ये कैसे कर सकते हैं? You have to learn how to hear it. आपको सीखना होगा कैसे पहले आप उसको सुन If सकते you हैं। cannot hear spiritual sound vibration or know the difference between that vibration and material vibration, how can you then generate spiritual sound vibration? अगर आप पहले आध्यात्मिक शब्द ध्वनि को सुनेंगे नहीं और ये समझ नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक शब्द ध्वनि और भौतिक शब्द ध्वनि में क्या अंतर है, आप आध्यात्मिक शब्द ध्वनि प्रकट नहीं कर पाएंगे। So without the right of hearing, तो बिना श्रवण का अधिकार प्राप्त which was किए my original point, which I started on, जो मेरी मूल बात है जिससे मैंने शुरुआत की थी, without getting that gift of the right of hearing by the mercy of Guru and Krishna, और बिना उस उपहार that का spiritual vibration will not enter in, will not understand what is that vibration. और बिना उस उपहार के और कृष्ण की कृपा के हम उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम सुन नहीं पाएंगे वो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि क्या है। And then from a materialistic point of view, you say, okay, he's talking about Krishna, this person is speaking about Krishna, I'm speaking about Krishna, what's the difference? और भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हाँ ये व्यक्ति कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, मैं भी कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों में अंतर क्या है हमारे You दोनों के won't बीच में? be able to make a distinction. आप भेद पता नहीं लगा पाएंगे। You won't see that it's something different. You won't see that the effect is different also. आप देख नहीं पाएंगे कैसे दोनों में भेद है और दोनों के प्रभाव में कैसे भेद है। Otherwise everybody's preaching, right? But why is everyone in bad consciousness? वरना सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग इतनी बुरी चेतना में क्यों हैं? Right? And then when we hear from our spiritual master, why is that then able to purify our consciousness and wake us up and give us all the effects and benefits of that hearing? Why is that dramatically different? तो कैसे हमें आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करने के बाद हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हमें सारे श्रवण के माध्यम से जो प्रभाव होने चाहिए प्रभाव दिखते हैं, तो इतना नाटकीय परिवर्तन कैसे हम देख पाते हैं? Because by Krishna's mercy, he empowers the words. क्योंकि कृष्ण की कृपा से वो उनके शब्दों में शक्ति डालते हैं। He manifests in the words. वो उनके शब्दों में प्रकट होते हैं। Otherwise, if Krishna doesn't manifest in the sound vibration, it's just a blank fire. There's no bullet. वरना अगर वो शब्द कृष्ण और शब्द ध्वनि में प्रकट नहीं होते हैं तो ये बस खाली बंदूक की तरह है। It's just blah 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 blah, right? बस blah 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 है।
Even you could be saying Krishna, Krishna, Krishna. यहाँ तक कि आप कृष्णा 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 भी But कह it सकते हैं, doesn't mean that Krishna manifesting there. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कृष्णा वहाँ प्रकट हो रहे हैं. Just like we chant Namaparad, we're thinking we're chanting, right? But Krishna not manifesting in Namaparad. तो जैसे हम नाम अपराध जप कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम जप कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा उस जप में प्रकट नहीं हो रहे हैं. Otherwise we get purified and stop chanting Namaparad. वरना हम शुद्ध हो जाएंगे और नाम अपराध जप करना हमारा बंद हो जाएगा. Why are we just continuing Namaparad? क्यों हमारा नाम अपराध चलता ही रहता है? Because Krishna knows you're thinking about something else. You want something else. क्योंकि कृष्णा जानते हैं आप किसी अन्य चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप दूसरी चीज चाहते हैं. So Krishna is not going to interfere. तो कृष्णा बीच में नहीं आएंगे. So why is that chanting not purifying us? तो क्यों ये हमारा जप हमें शुद्ध नहीं कर पा रहा? Why is that recitation and giving classes and preaching and speaking, why is that not purifying us and convincing us that this is absolute truth? क्यों ये परम सत्य है और हमारा प्रचार, हम जितना प्रवचन कर रहे हैं ये हमें शुद्ध नहीं कर पा रहा है, हो सकता है ये परम सत्य हो फिर भी. So what to do? तो क्या करें? That's the question, right? What to सवाल है. do? First realize that what is the qualification to be able to speak really Hari-katha, Krishna-katha, where Krishna will manifest in your speaking. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, ये साक्षात्कार प्राप्त करना होगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे पास कि कृष्णा हमारे शब्द ध्वनि के माध्यम से प्रकट हो सके. I remember one of my godbrothers, he thought he was a big preacher. मुझे याद है मेरा एक गुरु भाई वो सोचता था वो बहुत बड़ा प्रचारक है. He'd be like Adam, he'd have you against the wall, you know. वो एडम के जैसा था, वो आपको दीवार के पीछे लेके जाता, दीवार Touch Trinu, हमसे कहेगा hear from me. मुझसे सुनो. You know, he holds people hostage. वो लोगों को कैदी बनाकर रखता था. Yeah. He's thinking it's sadhu sangha and you're feeling like, I feel like a hostage. This is a hostage situation right now. वो सोच रहे थे कि वो साधु संगत दे रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता था उनको जो है कैद करके रखा गया है. I get a call in the SWAT team. You know, SWAT टीम को बुलाना पड़ेगा. just to extricate me from this situation. You know, ताकि मुझे इस स्थिति से बाहर निकाला जा सके. it's like I'm preaching to you, I'm preaching. Just listen. और ये कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो प्रचार कर रहा हूँ, बस सुनो. Why was I talking about this? मैं ऐसा करने की बात कर रहा हूँ. Huh? We have to understand about the spiritual sound vibration, then we can generate. So, my godbrother, right? So he thought he was a big preacher, right? तो मेरा गुरु भाई वो सोचता था बहुत बड़ा प्रचारक है. And he would just hold everybody hostage and preach to them. और वो सबको पकड़ के उनको प्रचार करने का प्रयास करता. Whether they wanted it or not, kind of like what Adam does, वो right? चाहे या ना चाहे, जैसे एडम करते हैं. So one day, my Guru Maharaj said to him, he said, hey, so and so Das, your adhika is to bang nails into the wood. तो मेरे गुरुदेव ने उनको बुलाकर कहा, सो एंड सो दास, तुम्हारा अधिकार है कि हथौड़ा लो और कील लेके ठोको बस उसको. Everyone has an adhika. Everyone has, let's say in a nice way, everyone has a God-given talent. कह सकते हैं कि सभी को कुछ भगवान ने कुछ न कुछ गुण दिए हैं. So just do that. तो हमें बस वो करने का प्रयास करना And that's चाहिए. perfect. और If ये you पूर्ण do है. that for Krishna, that's perfect. और अगर आप इसको कृष्ण के लिए करेंगे तो ये पूर्ण है. It doesn't matter what is that service. ये फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी सेवा But है. what does Krishna want you to do? What is your actual qualification? लेकिन कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, आपका असल अधिकार क्या है? Then do that for Krishna. तो वो कृष्ण के लिए कीजिए. That's a perfect. ये पूर्ण है. Krishna says, better you do your own service imperfectly than try to do someone else's service perfectly. कृष्ण कहते हैं आप अपनी सेवा हो सकता है गलत तरीके से करें, लेकिन दूसरे की सेवा सही तरीके से करने का प्रयास मत कीजिए. So that's why Prabhupada says, first you must find out in the definition of pure devotional service, what does Krishna want you to do exactly? What does he want you to do? इसलिए प्रभुपाद बताते हैं शुद्ध भक्ति की परिभाषा ये है कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, कृष्ण आपसे क्या करवाना चाहते हैं. And you can know that through the medium of bona fide spiritual master Prabhupada. और आप जान सकते हैं शुद्ध माध्यम कृष्ण परंपरा के माध्यम से. And when the Guru tells you, bona fide Guru tell you, then Krishna in your own heart will convince you, this is what you have to do. You should accept this instruction. It's coming from me. और जैसे ही आप उसको सुनेंगे प्रमाणी गुरु के माध्यम से, तुरंत ही कृष्ण आपको परमात्मा रूप में आपको बुद्धि देंगे कि हाँ आपको इसको सत्य को स्वीकार करना चाहिए. मुझसे आ रहा है. Krishna will tell, this is your psychophysical nature, this is your adhikar, this is the seva that you can do nicely, peaceably, from my service and service of my devotees. Krishna will say.
तो कृष्ण आपको बताएंगे आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका अधिकार क्या है। अगर आप वो सेवा फिर करने का प्रयास करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, And whether you're sweeping or cooking or preaching or whatever, तो आप if that's really what Krishna wants you to do and you do it for Krishna's pleasure, that's perfect, that's absolute. तो फर्क नहीं पड़ता आप सो रहे हैं, आप रसोई कर रहे हैं, किसी भी अन्य तरह की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको कृष्णा से आ रही है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो पूर्ण है सेवा। Prabhupada says not that you just do anything and then later you say, oh Krishna, that was for you. अब प्रभुपाद बताते हैं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी मनमाने ढंग से और बाद में कहें नहीं कृष्णा मैंने आपके लिए That's not, Prabhupada said, that's not in line of pure devotional service. प्रभुपाद बताते हैं यह शुद्ध भक्ति की दिशा में कार्य नहीं है। In beginning, Prabhupada said, okay, do something for Krishna. प्रभुपाद ने बताया शुरुआत में कि हाँ कुछ करो कृष्ण के लिए, Because we were doing nothing for क्योंकि Krishna. पहले आप कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं करते। But then as we're going, we start to think, well, what does Krishna want me to do? लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे जाते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। One person I remember, he was addicted to playing guitar. मुझे याद है कि व्यक्ति गिटार बजाने के बहुत बुरी लगती है। And he's like, you know, this guitar is this is like my wife. वो कहते थे ये गिटार मेरी पत्नी की जैसी है। I sleep with this guitar. मैं इस गिटार के साथ सोता हूँ। And then he's telling Prabhupada, you know, this is very difficult for me not to play guitar. और उन्होंने प्रभुपाद कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं गिटार नहीं बजाऊं। And Prabhupada said, yes, you must play guitar. मैंने कहा हाँ आप गिटार बजाओ, But chant Hare Krishna. लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो साथ में। So Prabhupada, he knows the psychophysical nature of the student and he instructs him accordingly. Time, place, circumstance, candidate. तो प्रभुपाद जानते हैं मनोवैज्ञानिक स्थिति अपने शिष्य की और वो समय, देश, काल और शिष्य के आधार पर उनको निर्देश देते हैं। So even if you know your psychophysical nature, यहाँ तक कि हो सकता है अपना मनोवैज्ञानिक स्थिति आप जान it लें, doesn't mean that acting in that way that Krishna is automatically accepting your service anyway. जो जरूरी नहीं है कि आप उस दिशा में अगर कार्य करें तो कृष्ण अपने आप ही आपकी सेवा को स्वीकार कर लेंगे। The point is, what does Krishna want us to do exactly? We receive through the purified medium of the bona fide spiritual master and disciplic succession for all ourselves. महत्व इस बात का है कि हम वही चीज करने का प्रयास करें जो हमें कृष्ण के शुद्ध माध्यम, कृष्ण परंपरा के माध्यम से जो सेवा प्राप्त हुई हो। And then while doing that service, Prabhupada said, you should think, I'm doing this to try to serve and please Krishna. प्रभुपाद बताते हैं ऐसी सेवा करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेवा कृष्ण से मिली है, मैं उनको प्रसन्न करने I के got लिए this सेवा कर रहा हूँ। instruction through my guru, but I'm doing it as a service for Krishna to make Krishna happy. तो मुझे ये निर्देश गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं ये सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। So the spiritual master, he knows what is Krishna's intention for everybody. तो आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कृष्ण का क्या उद्देश्य है सभी के लिए, Or for those who want to serve Krishna. या फिर वो जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। Otherwise, he knows their intention is for Maya. अगर वो जानते हैं कि आपका उद्देश्य माया के लिए है, But if our intention is to try to serve Krishna and please Krishna, then the Guru knows what Krishna wants us to do. लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण को सेवा करना है, कृष्ण को शरणागत करना है, तो गुरु जानते हैं हम कृष्ण हमसे क्या So चाहते they're हैं। telling, you know, your adhikar is to take nails and bang it into the wood. इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा अधिकार है कील लो और उसको लकड़ी में ठोको, Because this person was expert in construction. क्योंकि वो व्यक्ति बहुत निपुण था निर्माण करने में। He's a very talented builder. वो बहुत ही योग्य बिल्डर था। He even built temples. He built temples in ISKCON. यहाँ तक कि उन्होंने इस्कॉन में मंदिरों का भी निर्माण किया। This kind of qualified construction man. There's no offense against construction man. इस तरह के वो योग्य कंस्ट्रक्शन व्यक्ति थे, कोई बुरा मत मानिए जो भी कंस्ट्रक्शन के व्यक्ति हैं। I try to do construction, but I'm not very good at it. मैंने भी कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। I usually cut something or bang something. मैं हमेशा कुछ काट डालता हूँ या कुछ I तोड़ usually डालता end हूँ, up hurt at the end. Let's put it that way. और अंत में मैं खुद को ही चोट पहुँचाता था। Hurt or everything's in worst condition. But I try, you know, I'm trying to be sincere, you know. खुद को नुकसान पहुँचा देता हूँ और सभी कुछ टूट फूट जाती है। मैं लेकिन इस ईमानदार होने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फल यही होता है। But I certainly could not build like this person, like this God brother. That's unbelievable how he can build all these things. लेकिन अवश्य मैं अपने गुरु भाई के जैसा निर्माण नहीं कर सकता। ये बहुत अविश्वसनीय है कैसे वो इतने सारी अद्भुत चीज का निर्माण So it's करता है। not disrespectful to say your adhikar is to bang nails into the wood because he's talented at that. तो ये असम्मानीय बात नहीं है किसी को कहना कि तुम्हारा अधिकार है कि कील लेकर लकड़ी में ठोको, क्योंकि यही उसका स्वाभाविक गुण है। But he said, but don't preach. लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन तुम प्रचार मत करना, Because he understood
that's not your adhikar. That's not your qualification. क्योंकि वो समझ पाए कि ये उनका अधिकार नहीं है, उनका योग्यता नहीं है वो। Because he's so passionate, so emotional, so sentimental, he misunderstands everything. क्योंकि वो बहुत रजोगुनी है, बहुत भावनात्मक व्यक्ति है, तो वो सब कुछ गलत समझता है। So what is the value of his preaching? तो उसके प्रचार का क्या अर्थ है? So better do something practical for in Krishna's service. तो बेहतर होगा कुछ व्यवहारिक चीज करें कृष्ण की सेवा के लिए। So we must understand our adhikar. What does that mean is, what is our actual qualification, and according to that qualification, how does Krishna want us to be engaged in his devotional service? तो हमें ये समझना होगा हमारा अधिकार क्या है, उसका अर्थ ये है हमारी असल योग्यता क्या है, और कृष्ण हमारी इस योग्यता को कृष्ण की सेवा के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे समझने की जरूरत है। Okay. And if you take that service and you make it your life and your soul, और प्रभुपाद बताते हैं अगर आप उस सेवा को लेते हैं और उसे अपने जीवन का सार बनाते हैं, try to please Guru and Krishna by that seva, और गरीब कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं उस सेवा के that's the माध्यम से, secret of success in your spiritual life. प्रभुपाद बताते हैं ये सफलता का रहस्य है आपके आध्यात्मिक जीवन का। Every soul is equal in the eye of the Lord. हर एक जीवात्मा भगवान की नजरों में एक है। Doesn't mean that someone's doing this service or that service is better than anybody else. It just means they have a different nature and a different role to play in the overall, system of Krishna's, devotional service. तो जरूरी नहीं है कि His mission. कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरी सेवा कर रहा हो, दूसरा कोई व्यक्ति कोई अन्य सेवा कर रहा हो, तो कोई सेवा उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी का अलग अलग योग्यता है, अलग अलग स्वभाव है कृष्ण के इस पूरे भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया में। So Krishna is doing many things at the same time. तो कृष्ण एक ही समय में बहुत सारे कार्य करवा रहे हैं। So how Kishore Das Babaji Maharaj, he's just minding his own business, doing his bhajan. But Krishna, he had some other seva that he had to do. लेकिन गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने स्वयं का कुछ भजन करना चाहते थे, लेकिन उन कृष्ण को कुछ अन्य सेवा थी उनके लिए। You have to take one disciple. आपको एक शिष्य स्वीकार करना होगा। And he just happens to be the most intelligent scholar on the planet. और वो उस पूरे ग्रह का सबसे बुद्धिमान विद्वान था। But I want to make some point here that you don't have to be the most intelligent scholar on the planet to get prem bhakti. लेकिन यहाँ ये बात बताई जा रही है कि आपको सबसे बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है इस पूरे ग्रह का प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। Otherwise, it looks like everyone has to be like Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. It's like you have to be like on this platform to practice the bhakti, right? It seems like who's like this? वरना देखने में ऐसा लगता है कि आपको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसा गुण प्राप्त करना होगा, बुद्धिमानी प्राप्त करना होगा, लेकिन ऐसा कौन है भक्ति करने? What about all the other common people who will come that have like little to no qualification? और उन सामान्य व्यक्तियों को क्या कहना जिनका असल में कोई योग्यता नहीं है? How will they think that they can do bhakti? कैसे वो सोच पाएंगे कि वो भी भक्ति कर सकते हैं? Well, then if an illiterate person who can't even sign his own signature can be, topmost Mahabhagavata Premi Bhakta in this process of bhakti, that means with mercy, anybody can do. यानी कि कोई अनपढ़ व्यक्ति जो स्वयं का हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता हो, वो शुद्ध प्रेमी भक्त हो सकता है। इसका मतलब कोई भी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। So without mercy of Guru and Krishna, we won't get the right of hearing. तो बिना गुरु कृष्ण की कृपा के हमें श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। It's a gift. It's a qualification from outside that's given to you. ये एक उपहार है, ये एक योग्यता है जो हमें बाहर से हमें दी जाएगी। It's not something I'm just gonna hear, like by your own strength, your own effort, your own intelligence. It's not gonna come like that. ऐसा नहीं कि हम कहें हम जाकर सुनेंगे, हम स्वयं हमारे स्वयं की शक्ति से, स्वयं के प्रयास से। You can have desire to want to understand, definitely. आप इच्छा कर सकते हैं कि आप उसको समझने का प्रयास करें। But what is it that makes Krishna and the Guru give us this type of spiritual mercy or gift? लेकिन हमें क्या करना होगा कि गुरु और कृष्ण हमें इस तरह का उपहार या इस तरह की कृपा दे। That's what Prabhupada said, if you're not greedy to understand the absolute truth, that's a requirement, that's a prerequisite. इसलिए प्रभुपाद बताते हैं अगर आप लोभी नहीं हैं तो ये प्रथम आवश्यकता है, ये जरूरत है। Not passive curiosity, बस किसी तरह का साधारण जिज्ञासा नहीं, with no real interest in the subject matter. और कोई असल रुचि नहीं है विषय वस्तु में। You have to be perfectly anxious to understand it.
आपको पूर्ण रूप से व्याकुलता रखनी होगी उसको समझने के लिए, every point, हर एक बात को, and extremely inquisitive. अब पूर्ण रूप से हमें जिज्ञासा होना होगा। And then you're going to person who is in Krishna Parampara, you should not go with any challenging mood. और अगर आप कृष्ण परंपरा में किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको चुनौती वाले भाव से नहीं जाना चाहिए। Prabhupada said that, it says after, I think Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was saying that the guru's testing after 1 year as a potential disciple. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि गुरु परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य का 1 साल तक। We always hear it to know the disciples testing for 1 year to see whether this person will be worthy of my being his disciple. हम हमेशा सुनते हैं कि हमेशा शिष्य परीक्षा लेता है 1 साल तक कि ये व्यक्ति योग्य है नहीं हमारे गुरु बनने के लिए। So the guru's testing. गुरु परीक्षा लेते हैं। Will this person hear submissively with faith, with no challenging attitude? क्या ये व्यक्ति सुनेगा विनीत भाव से बिना किसी चुनौती वाले भाव के साथ? So can they put no challenging attitude? क्या वो बिना किसी चुनौती के भाव से आ सकते हैं? And then will they submissively hear with faith and accept what I'm going to say, what I'm trying to say to them? और क्या वो विनीत भाव से उसको श्रवण करेंगे, श्रद्धा रख कर कि वो उस चीज को स्वीकार करे जो मैं उनसे कह रहा हूँ? Then he may accept you as disciple. तब वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते So हैं। that means those are the qualifications to be accepted, to get mercy of Guru Krishna. इसका मतलब ये सारी योग्यताएं हैं कि गुरु कृष्ण आपको स्वीकार करें, आपको कृपा दें। My Gurudev used to say, if you have one tinge of doubt, it won't work. मेरे गुरुदेव कहा करते थे अगर आपको एक बूंद भी संदेह है तो ये काम नहीं करेगा। Because that means then you're just still listening to Maya, you're listening to your stupid mind. इसका मतलब अभी भी आप माया को सुन रहे हैं, अपने बेवकूफ मन को सुनते हैं। You're not trusting Krishna. आप कृष्ण में विश्वास नहीं You're कर not रहे हैं। trusting Krishna's process by which he's going to try to give you that knowledge and intelligence of himself. आप कृष्ण की उस प्रक्रिया में विश्वास नहीं कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो आपको बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे उनको जानने के लिए। We're thinking we know better. हम सोचते हैं हम बेहतर जानते We हैं। think we can know by our own intelligence, strength, and understanding, and logic, and experience, all of these other things. तो हम सोचते हैं हम स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की शक्ति से, स्वयं के प्रयास से और स्वयं के तर्क करने से हम सारी चीजों को समझ सकते हैं। So that means not coming with the, with this perfect anxiousness to know the absolute truth, but not in a challenging mood. तो इस तरह से पूर्ण व्याकुलता परम सत्य को समझने के लिए बिना चुनौती भाव से हमारे अंदर नहीं है। In a humble state of mind. विनम्र भाव से। So those are all the prerequisites which are required to please Guru and Krishna for them to give us the right of hearing. तो ये पहली आवश्यकताएं हैं जिससे गुरु कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें वो श्रवण का अधिकार दे अपनी कृपा के माध्यम से। They'll test us. You have to pass the test. वो हमारी परीक्षा लेंगे, हमें उनकी परीक्षा पास And when करनी they है। feel that you passed the test, then they'll purify your mind and your senses and allow you to properly hear perfect knowledge from perfect souls. और अगर वो जान पाएंगे अपने परीक्षा पास कर ली है तो वो आपको शुद्ध करेंगे, आपको बुद्धि देंगे ताकि आप सही तरीके से चीजों को समझ सकें। Before that, what do you think you're hearing? उससे पहले आप जो भी सोचते हैं, आप जो सुन रहे हैं, I thought when people were sitting with my guru, everybody's hearing same way. मैं सोचता था जब मेरे गुरुदेव के सामने सभी लोग बैठे हैं तो सभी लोग एक ही चीज सुन रहे हैं। But Gurudev said, how many are actually hearing? लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा कितने लोग असल में सुन पा रहे हैं? Hardly anybody. मुश्किल से कोई सुन पा रहा है। Because their mind is stolen by illusion. क्योंकि उनके मन को मोह ने And चुरा they're लिया distracted on bodily mental platform. और वो शारीरिक मानसिक स्तर से भटके It's हुए a हैं। bodily relations. शारीरिक संबंधों में I, me and mine. मैं मेरा, So they cannot hear तो anything. इसलिए वो कुछ सुन नहीं सकते, They're distracted. वो भटके हुए हैं। So without hearing perfectly spiritual knowledge by mercy of Guru and Krishna, you cannot speak spiritual knowledge. तो बिना गुरु कृष्ण की कृपा से पूर्ण ज्ञान श्रवण किए बिना हम पूर्ण ज्ञान बोल नहीं सकते। And the speaking, if we try to speak it, it'll just be theoretical. और अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे तो ये सिर्फ मौखिक होगा। The Guru said, what you heard and what you realized by the mercy of Guru and Krishna, just speak that. मेरे गुरुदेव कहा करते जो आपने सुना, जो आपने साक्षात्कार किया गुरु कृष्ण की कृपा से, वो बोलने का प्रयास करो। I remember when I told you the story when I first became devotee and I went to see my father for the first time. तो मुझे याद है जब मैं पहली बार नया भक्त बना और मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया पहली बार, And I just shaved my head. और मैं अपना सर मुंडवाया था, Put on these orange robes. मैंने जो है नारंगी कपड़े पहने थे, And I had a big tilak, बहुत बड़ा तिलक लगाया था मैंने।
My father's like an Irish Catholic Christian guy, you know. और मेरे पिता एक आयरिश कैथोलिक ईसाई व्यक्ति हैं। So I'm going down to see Dad, you know. तो मैं अपने पिता से मिलने जा रहा था। I remember when I was walking in I was so nervous, you know. I got to see my father, and I look like this wild monk, you know. And he's like a really devout Catholic guy, like fanatic, you know. I'm like, oh, this is gonna be interesting. तो मैं थोड़ा बहुत सहम कर जा रहा था क्योंकि मैं पूरी तरह से एक जंगली साधु की तरह लग रहा था और मेरे पिता जो है एक आयरिश कैथोलिक बहुत ही फैनाटिक तरह के व्यक्ति थे। I remember when I first told him, I figured out what I want to do. और मुझे याद है जब मैं अपने पिताजी को बता रहा था। And he was like, oh God, what? और फिर उन्होंने मुझे कहा क्या बताना चाहिए? Because he knows I can say anything to him, right? क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ भी उसको कह देता हूँ। Oh God, what? He's like preparing himself. What is this guy going to say now, you know? उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहना चाहते हो? अपने आप को तैयार करने का प्रयास करते कि क्या कहेगा मुझे? And I said, I want to become a Hare Krishna devotee. और मैंने कहा कि मैं हरे कृष्ण भक्त बनना चाहता हूँ। And my father was like, oh Jesus, you know? मैंने कहा oh Jesus. Why can't you just become a Christian priest? Why do you have to become Hare Krishna devotee? You know? तुम एक ईसाई पादरी क्यों नहीं बन जाते? तुम एक हरे कृष्ण भक्त क्यों बनना चाहते हो? So anyway, later, finally I shaved off and I put on the robes, I was brahmachari, right? So now I have to, first time I have to go see my father. तो कोई बात नहीं, मैंने अपना सर मुड़ा लिया, मैंने भगवा वस्त्र पहन के मैं अपने पिताजी से पहली बार मिलने के लिए गया। And when I was coming in the house, my sister was there. और मैं जब घर के अंदर आ रहा था, मेरी बहन वहाँ पे थी। She saw me for the first time dressed like this. और उन्होंने पहली बार मुझे देखा इस तरह की पोशाक पहने हुए। And she says, "Hey brother, what's up with the war paint?" She was calling it war paint. You know? और मेरी बहन ने कहा, भाई ये तुमने जो है जंग में लगाई जाने वाली क्यों पहनी है? तिलक क्यों लगाया? They never saw someone with the tilak on their face, you know, and I probably put it on like really thick, you know. I look like I came from Africa or something. You know? तो उन्होंने कभी देखा नहीं था किसी व्यक्ति को इस तरह से तिलक लगाए हुए और मैंने अवश्य बहुत मोटा तिलक लगाया होगा, उनको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति अफ्रीका से आ रहा हो। I mean, this is quite intimidating for the parents, don't you think? और माता पिता के लिए बहुत ही अलग सी बात थी। My sister's nervous. She says the brother's going in with war paint. He's going to talk to the father. You know, maybe I should stay and protect dad. You know. तो मेरी बहन थोड़ी सहम रही थी क्योंकि मेरा भाई इस तरह का जंग में पहने वाली जो पहचान लगाकर आया था और मेरे पिता से बात करने जा रहा था, मुझे अपने पिता की रक्षा करनी चाहिए। So my father, you know, he's a pretty cool character, you know. तो मेरे पिता एक बहुत ही अलग से किरदार है। So he just, you know, he's acted like, you know, everything's cool, you know, like nothing different, you know. तो वो जो है ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ बदला नहीं है, सब कुछ ठीक है। I mean, he saw a lot in his life, so he was just like, okay, you know. तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, उन्होंने कहा चलो ठीक है ये भी देख रहे हैं। So then I sit down with them and he's saying, so you know, what's going on? तो मैं वहाँ बैठा तो पूछा क्या चल रहा है? So I start talking to him about all the presiding deities on the Vaikuntha planets. तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया, वैकुंठ लोगों के जितने प्रमुख विग्रह हैं उनके बारे में बात करना मैंने शुरू किया। So can you imagine? I just read that in the Bhagavatam, so I'm thinking it's fresh in my mind. Let's talk to Dad about the presiding deities in the Vaikuntha planets, you know. तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैं बस अभी तुरंत श्रीमद् भागवतम में ये पढ़कर आया हूँ, मैं अपने पिताजी से ये सारी बातें करूँगा कि वैकुंठ लोगों के प्रमुख विग्रह कौन-कौन से हैं। So he's just patiently listening to me, you know, looking at me like a little strange, you know, like what happened to my son, you know, a little bit like that, you know. What happened to this guy, you know. तो वो पूरे धैर्यपूर्वक मुझे सुनने का प्रयास करते हैं और विचित्र रूप से मुझे देख रहे थे कि इसको हुआ क्या है कि उस तरह से बातें कर रहा है। So then he's listening. After a little while, he said, "My dear son, can I say something?" He's being humble. Like, can I also get some word in here? You know, because I was just. He said, "Can I say a couple words?" You know? Yes, father, of course. तो मेरे पिता ने थोड़ी देर तक मुझे सुना, फिर विनम्र भाव से मुझे कहा कि तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो, क्या मैं भी थोड़ा कुछ बात कह सकता हूँ तुमको? And then he said to me, can I just give you like a little bit of advice? उन्होंने कहा कि क्या मैं तुमको कोई छोटा सलाह दे सकता हूँ? And I was like, of course, you know, I was already puffed up. You know, I'm like 1 week in the movement, I'm already puffed up because I got these wild robes on and a shaved head. All of a sudden I'm a monk, you know.
तो मैं बोला हाँ अवश्य, मैं पहले से बहुत अहंकारी था। एक हफ्ता पहले मैं जो है संस्था से जुड़ा हूँ और मैंने जो है इस तरह पागल जैसे साधु जैसे और भगवा वस्त्र धारण करके मैं आ गया हूँ अहंकार में। He said, I said, yes, Father. मैंने कहा पिता। And he said, why don't you just try to speak like something that you truly realize? क्यों आप उस चीज को बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो असल में आपने साक्षात्कार किया हो? Instead of like speaking all of these technical things that maybe you just found out about that. और उन चीज़ों के बजाय, उन तकनीकी चीज़ों के बजाय जो आप कुछ बस समय पहले बस देख कर आए हैं, पता लगा कर आए हैं। You know, it says like the father's always, he has one on top of you, right? No matter what's happening, you know. ऐसा कहा जाता है पिता हमेशा आपसे एक कदम आगे होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। So he very nicely, very humbly, you know, he put me in my place. तो बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मुझे अपने स्थान में डाल दिया। And I really felt like Krishna was speaking to him. और मुझे असल में ये पता लग पाया कि कृष्णा उनके माध्यम से मुझे बता। Because this is the point of what Krishna has revealed to you, what you can call your own by His mercy, what you have realized. Just speak that because that's true. Speak the truth of what you know, what you realize. Don't try to speak some other thing. Try to impress anybody, yourself or anybody else. तो यहाँ ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी आपने कृष्ण की कृपा से साक्षात्कार किया है, जो भी आपने सुना है, उसको बस बताने का प्रयास कीजिए। वो नहीं कि दूसरे को आप प्रभाव डालने के लिए क्या उनको बताना चाहते हैं, क्या उनको सिखाना चाहते हैं। So what you realize, just speak that. जो आपने साक्षात्कार Do किया it in है a उसको humble बोलने state का of प्रयास mind. करें और विनम्र Do मनोभाव it for से the pleasure of Guru and Krishna. गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के Do in लिए a mood of trying to be helpful if they're willing to listen to what are you saying. और सहयोगी बनने का प्रयास करो। अगर वो तैयार हैं, आप क्या उनको कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए If तैयार we हैं। approach it in a humble way, trying to honestly, sincerely share some true information, most people will appreciate it. तो अगर हम ईमानदारी से, एक निष्ठता से, गंभीरता से लोगों को सत्य बताने का प्रयास करेंगे तो ज्यादातर लोग जो है इसको सराहना करेंगे। My Guru said, if what you're going to tell that person, this person will not nicely hear it or take that advice from you, better don't disturb them. मेरे गुरुदेव कहा करते थे अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ कहना चाहते हैं और उसको सही तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, बेहतर होगा आप उनसे बात ना करें। You would say, first find out, will they really appreciate what are you telling them? तो उससे पहले ये पता लगाने का प्रयास करो, कम से कम वो सराहना करेंगे आप उनको क्या कह रहे हैं। Then say something in a humble way, humble state of mind. तब उनको कुछ कहने का प्रयास कीजिए विनम्र मनोभाव से, Enthusiastic, उत्साहपूर्वक but humble. लेकिन विनम्र भाव से। And always remember where you got this information from. और हमेशा ध्यान रखना कि ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है। This is a gift that was shared to us. It does not belong to us. ये हमें उपहार मिला है जो हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा We नहीं did है। not manufacture this thing. हमने इसका निर्माण नहीं किया है। We're just simply passing and sharing like a peon. हम बस लेकर आ रहे हैं और उसको बांट रहे हैं, My जैसे Gurudev, चपरासी करते हैं। many times he said, I'm just like a pipe. मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते हैं मैं बस एक पाइप के जैसा हूँ। One pipe is going in my ear and other pipe is going like that. और एक पाइप मेरे कान में है, दूसरा पाइप मेरे मुंह से Just a निकल रहा है। pipe. मैं बस एक पाइप हूँ। And you should never think, no, I'm the reservoir. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही भंडार हूँ। Just a mere pipe. मैं That's बस all. एक सरल What पाइप Guru हूँ। Krishna is saying, try to understand it, try to realize it, practice it, and then try to share that in a humble state of mind. जो भी गुरु कृष्ण कह रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करो, उसको समझने का प्रयास करो, अभ्यास करने का प्रयास करो और उसी बात को लोगों के साथ बांटने का प्रयास that करो, you can remember the instructions. ताकि आप उन निर्देशों को याद रख And पाएं those instructions will also purify you और वो and निर्देश help you, आपको भी शुद्ध करे, आपकी मदद करे and then try to help other people as well और दूसरे लोगों को भी मदद करने का for प्रयास the करें pleasure of Guru and Krishna. गुरु कृष्ण की Because this प्रसन्नता is के लिए, preaching movement. क्योंकि ये प्रचार का It's not आंदोलन a है, selfish ये movement. स्वार्थ आंदोलन नहीं है। Okay, I got this mercy, this information from my Guru. I'm all right. और मुझे ये जानकारी मिला गुरु कृष्ण की कृपा से, मैं ठीक हो I गया, don't care about anybody else. बाकी लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। No, if you got mercy and you don't share it with other people, you will lose it. अगर आपको कृपा प्राप्त हुई है और अगर आप उसको अन्य लोगों के साथ नहीं बांटते हैं तो आप कृपा खो देंगे। It must be shared. अवश्य आपको बांटना होगा And the more you share it and try to help other people, the more you get anyway. और जितना ज्यादा आप लोगों के साथ बांटने का प्रयास करेंगे आपको उतना ज्यादा मिलता रहेगा। It's not like material. The more you give, then you end up bankrupt. ऐसा ये Nothing left to भौतिक give.
ये ऐसे भौतिक चीज नहीं है कि जितना बांटने का प्रयास करें आपका पूरा बैंक खत्म हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे आप। Right? You just keep giving. Before you know, you're like, you have any money? You know, I need to eat something. You know. तो जैसा बांटना शुरू करें, बांट कर आप खत्म कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा मेरे मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। Spiritual sphere, it's an unlimited reservoir. और आध्यात्मिक जगत में ये असीमित भंडार है। And it's actually like competition. Like the more you try to give it away, the more Krishna will give you. असल में एक प्रतियोगिता है कि जितना ज्यादा आप बांटने का प्रयास करेंगे, कृष्ण आपको उतना ज्यादा देते रहेंगे। It never is empty. It never bankrupt. कभी खाली नहीं होगा, कभी दिवालिया नहीं होगा। It's just more and more and more, and bigger pipe is required. ज्यादा बढ़ता जाएगा और ज्यादा बड़ा पाइप की जरूरत पड़ेगी। By mercy of Guru Krishna. गुरु कृष्ण की कृपा से। Does that answer your question? क्या आपके सवाल का जवाब मिला? Some part of it? कुछ भाग में। What's the other part? दूसरा भाग क्या है? So otherwise, I shouldn't speak anything. Huh? Otherwise, I should just speak what I realized and to be true. Otherwise, I shouldn't speak anything. I shouldn't. Yeah. How can you speak something you don't realize? Just be silent. It sounds foolish. आप कैसे किसी ऐसी चीज को बता सकते हैं जिसका आपने साक्षात्कार नहीं किया हो? वो मूर्खता लगता है सुनने में। It's like if you're an expert in computers and somebody doesn't even know how to open the computer. जैसे आप कंप्यूटर में बहुत निपुण हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं कंप्यूटर खोलना कैसे है। I remember one time I talked in one big interview. They gave me the job. मुझे याद है एक बहुत बड़े इंटरव्यू में मुझे एक बहुत बड़ा नौकरी मिली। Nice office, nice everything. I was in there. I'm like, I don't even believe I got this job. You know. बहुत अच्छा कार्यालय था वहाँ, बहुत सब कुछ अच्छा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। And they said, you know, your computer is there and everything. I don't even know how to use computer. You know. उन्होंने कहा आपका वहाँ कंप्यूटर है और मुझे पता भी नहीं था कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। Then I'm calling my friend on the phone. I said, how do you open the computer? You know. और मैं अपने मित्र को फोन करके पूछ रहा था कंप्यूटर को खोलते कैसे हैं। So if I'm going to start talking about computer and you're expert in computer, you'll be like, this guy doesn't know very much about technology, right? It's very obvious. तो अगर मैं इस तरह कंप्यूटर के बारे में बात करना शुरू करूँ और दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर में पूरी तरह निपुण है तो अपने आप ही समझ जाएगा इसको कुछ भी नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में। So why try to talk on something that you don't really know about it? तो उस चीज के बारे में क्यों बात करने का प्रयास करना जिसके बारे में हम जानते ना हो। And one who really knows would be like, this person has no idea what he's talking about. और जो असल में जानता है वो समझ पाएगा कि इस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है क्या बात कर रहा है। Or he knows something, but you get a lot of misconception going on there, you know. ये हो सकता है कुछ जानता हो लेकिन बहुत सारी गलतफहमियां हैं उनके अंदर अभी भी। You're not connected all the dots yet. सारी बिंदुओं को अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं। So you just better just in humble state of mind, what you think you. Not what you think, what you did receive by the mercy of Guru Krishna. I don't want to say think, I think this is true, but I don't know. तो जो भी आपने गुरु कृष्ण की कृपा से प्राप्त किया है, जो सोचते हैं मतलब, लेकिन आप मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जो सोचते हैं वरना फिर आप like Srivas giving class, you know. फिर आप श्रीवास के जैसे क्लास देंगे। I think it's like that. मुझे ऐसा लगता है ऐसा है। I'm hoping it's like that. मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। No, he doesn't do that anymore, right? नहीं, अभी ऐसा नहीं करते। He gave that up. Now he's like convinced. अभी ऐसा नहीं करते, अभी आश्वस्त हो चुके हैं। Guru Sadhu Shastra. गुरु साधु शास्त्र। Adam, what's your adhikar, man? एडम, आपका अधिकार क्या है? I thought he was saying talking. बोलने वाला बोलना मेरा अधिकार है। Well, this way means it's got to go this way first. इसका मतलब पहले इधर जाना होगा, उसके बाद इधर जाएगा। Then it can go that way. तब ये इधर से जा पाएगा। If you don't let it go this way, it can't go that way. अगर ये इधर नहीं जाएगा, मैं तो Doing इधर it नहीं all जा पाएगा। backwards. आप उल्टा कर रहे हैं सब कुछ। So, is that better? अब बेहतर है थोड़ा। You can read something and just try to remember according to Guru Sadhu Shastra. This is how I came to understand this thing. आप कुछ पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और याद करने का प्रयास कर सकते हैं। गुरु कृष्ण ने मुझे इस तरह से बताने का प्रयास किया था। Did you always have to quote authority? Where you got it from? Who you heard it from? हमें हमेशा प्रशासन को सामने रखना पड़ता है, हमने किससे ये सुना है। Otherwise, why people should listen to you? वरना लोग हमें क्यों सुनेंगे? Well, in my opinion, it's like this and that. It's like, who are you? जैसे हमारे विचार में ऐसा ऐसा है, हम कौन हैं? Like, what's your qualification? हमारा क्या अधिकार है?
So that's why my Gurudev always, he was expert, he could quote all kinds of shastra. इसलिए मेरे गुरुदेव बहुत निपुण थे, वो सभी तरह के शास्त्र और कथन बताते थे। We can just quote what we heard from Prabhupada and Srila Gaura Swami mostly. हम ज़्यादातर वही कथन बता पाते हैं जो प्रभुपाद ने और श्रील गौर स्वामी महाराज ने कहा। Because mostly people, they have faith in Prabhupada. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रभुपाद में श्रद्धा है। And you know, they can come to understand about Gaura Swami. और फिर वो समझने का प्रयास कर सकते हैं श्रील गौर स्वामी महाराज को, गुरुदेव को। That's where we got it all from. वहीं से हमें ये सारी चीजें मिली हैं। I saw what I got from reading. मैं देख पाया, मुझे पढ़कर I किताब already told you that. पहले आपको What did बता I ultimately, what's the best I could do? सबसे श्रेष्ठ मैं क्या कर पाया, Just from a scholastic or academic point of view. शैक्षणिक तरीके से, शैक्षणिक विद्वता के आधार पर। And then I got, what did I get and realized by hearing from someone who knows what's in the book. और जब तब मैं ये साक्षात्कार कर पाया कि उनसे श्रवण करने के बाद जो असल में जानते हैं किताबों के अंदर क्या बातें लिखी हैं। He was showing me things that were in the book I never even knew it was there. वो मुझे किताबों में ऐसी चीजें दिखाते थे, मुझे पता भी नहीं था ये कितना चीजें किताबों में लिखी हुई हैं। He said, yeah, it's right there in Prabhupada's book. I was like, where? वो कहता था यहाँ प्रभुपाद की किताबों में लिखी है। मैं कहता था कहाँ लिखी है? And I'd be like, wow, I never saw that before. मैं कहता था वो आई तो मैंने पहले कभी देखी भी नहीं है। Everything is there हर कुछ वहाँ है in Prabhupada's books and teaching. प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं It में। just has to be unpacked अभी इनको खोलने की जरूरत है or explained in a way that we can understand what does it actually mean. इस तरह से व्याख्या करने की जरूरत है, हम समझ पाए असल में इनका क्या अर्थ है। So if you hear from someone who has unflinching faith in Srila Prabhupada, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जिनको अटूट श्रद्धा है श्रील प्रभुपाद में, and by Prabhupada's mercy knows what the books and teachings are from Srila Prabhupada, और प्रभुपाद की कृपा से वो समझ पा रहे हैं कि प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं में क्या बातें लिखी हैं, and is expert in explaining it, और ये बहुत निपुण है उसको व्याख्या करने में, and you hear from that person, और अगर आप वैसे व्यक्ति से सुनते हैं then your understanding will be completely different by their mercy. तो आपका समझ बहुत ही अलग होगा उनकी कृपा से। Prabhupada said there's reading and then there's hearing. Out of the two, hearing is much better. प्रभुपाद बताते हैं पढ़ना और सुनना, उसमें से सुनना ज्यादा बेहतर है, Because by reading you may misunderstand it, क्योंकि आप पढ़कर कुछ चीजें गलत समझ सकते but हैं, if you hear perfect knowledge from perfect source, then by that mercy you'll understand it properly. लेकिन अगर आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे तो उनकी कृपा से आप पूर्ण रूप से समझ And पाएंगे। if you understand it properly, then you can explain it properly. अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, And not theoretically, ये बस मौखिक नहीं होगा but factually, बल्कि तत्व में होगा, scientifically. वैज्ञानिक रूप में। That's the difference. ये अंतर है। So, any last thing? कोई आखिरी चीज? Everybody's all right? सभी ठीक है? Srivas, anything? श्रीवास कुछ है? Yeah. Deva, you all right? देवा आप ठीक हैं? I hope your wife is doing a little bit better. मुझे उम्मीद आपकी पत्नी थोड़ी बेहतर है। Everybody's praying, concerned for her, for your welfare. प्रार्थना कर रहे थे, आप उनकी चिंता कर रहे थे आपकी भलाई के लिए। Only mercy can solve the situation. सिर्फ कृपा से इस स्थिति के समाधान हो सकता है। Krishna is ultimate protector. कृष्णा अंतिम रक्षण करता है। And he knows what's best for all of us. और उनको पता है हम सभी के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। We don't know what's best for us. हमें नहीं पता हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। We think we do. हम सोचते हैं हमें पता है। But really Krishna knows. लेकिन असल में कृष्णा जानता So है। that's why Prabhupada said, just trust Krishna. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बस कृष्णा में विश्वास Krishna करो। knows past, present and future. कृष्णा भूत भविष्य वर्तमान जानते He हैं। knows what's in everyone's best interest. उनको पता है सभी के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। So whatever his will, his desire is, just let that happen. तो जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी योजना है, उसको होने दीजिए। Whatever he says, whatever he decides, जो भी वो कहते हैं, जो भी वो फैसला लेते हैं, that's best. ये सबसे श्रेष्ठ होगा। And that takes away all the anxiety and all the worry and trying to figure all of these things out. Just trust Krishna. Depend on Krishna. और ये आपकी सारी चिंताओं को से आपको मुक्त कर देगा। बस कृष्ण में विश्वास रखिए, कृष्ण में भरोसा रखिए। Sometimes life is so difficult, so confusing, so disturbing. You cannot even think it out. कभी-कभी जीवन इतनी मुश्किलों में आ जाता है, इतनी परेशानी में आ जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। So especially like that, you just say, okay, Krishna, you know best. You know, whatever you think is in everyone's best interest, please just do it and just give me strength, intelligence to understand it and just to try my best to
accepted and executed. तो हमें ऐसे समय बस प्रयास करना चाहिए कि कृष्णा में पैसे पूरी तरह निर्भर हो सकें, क्योंकि वो जानते हैं सबसे श्रेष्ठ क्या है हमारे लिए, सभी के लिए, और किसी तरह उसको जानने के लिए, समझने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए, श्रद्धा दीजिए, और उसको स्वीकार कर पाऊँ मैं और उसमें कार्य कर पाऊँ। And Krishna will say. और कृष्णा बताएंगे। Prabhupada said, Krishna, you can make me a success or you can make me a failure. प्रभुपाद ने कहा, कृष्णा आप मुझे या तो सफल बना सकते हैं या आप चाहे मुझे असफल बना सकते हैं। You can do and you can undo. आप कुछ भी कर सकते हैं और उसको संभव व असंभव According कर to सकते हैं। your own will, your own desire, you can do and undo. अपनी इच्छा मात्र से आप सभी चीजों को कर सकते हैं। So that's up to Krishna. तो ये कृष्णा के ऊपर है। We cannot control anything. हम कुछ भी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। Krishna says, because of your false ego, you're thinking you can control everything. You're doing everything. कृष्णा कहते हैं अपने मिथ्या अहंकार से आप ये सोचते हैं आप सभी चीजों को नियंत्रण कर सकते हैं, सभी चीजें कर सकते हैं। But Krishna says, actually, I'm doing. लेकिन कृष्णा बताते हैं असल में मैं कर रहा हूँ। You're thinking I'm thinking, I'm planning, I'm doing. You think you're doing it by the false ego platform. आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और बाकी योजना बना रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं अपने मिथ्या अहंकार की वजह से। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Prabhupada said, the only thing you can do is desire. प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र कार्य हम जो कर सकते हैं So इच्छा we should करना। desire to do what Krishna wants. तो हमें इच्छा करनी चाहिए वो इच्छा कि कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं। Because that's best for everybody. क्योंकि ये सभी के लिए श्रेष्ठ है। Only we need intelligence and faith to understand what it is. हमें बस बुद्धि चाहिए, श्रद्धा चाहिए जानने के लिए वो क्या है। And if you're depending, Krishna will reveal that to you. और अगर आप उनके ऊपर निर्भर हैं तो कृष्ण वो प्रकट करेंगे And आपके then सामने। the strength to be able to have the will and the strength to execute it to the best of our ability. There's nothing else we can do. और आपको शक्ति देंगे, आपको श्रद्धा देंगे, योग्यता देंगे, उसको आप श्रेष्ठ तरीके से कर पाएं। इसके अलावा हमें अन्य चीज करनी नहीं है। Keep it simple. इसको सरल रखिए। Don't overthink it. ज्यादा सोचिए मत इस पे। You cannot think it up anyway. वैसे भी हम ज्यादा सोच Say, नहीं पाएंगे। Krishna, whatever you want, let it happen. कृष्णा जो भी आप चाहते हैं उसे होने And दीजिए। let me just participate, cooperate in your will and your desire. और मुझे भाग लेने दीजिए, मुझे सहयोग करने दीजिए आपकी इच्छा में। And He knows what's best. और उनको पता है सबसे श्रेष्ठ क्या है। We don't know what to हमें do. नहीं पता क्या करना है। We always look at our whole life. Did we make every nice, right decision in our life? Everything worked out perfectly well? अपने जीवन में झांक कर देखिए क्या हमने सारी फैसले सभी हमेशा सही तरीके से लिए और सभी हमेशा सही फल हमें दे पाए। How well did we actually manage our life up to this point? आज तक हमने अपने जीवन में कितने सही तरीके से व्यवस्थित कर पाए अपने जीवन This को। is countless mistakes and blunders, isn't it? असंख्य गलतियां की हमने, बहुत बड़ी Miscalculations, सारे गलत गणना की, bad decisions, गलत फैसले लिए that we're suffering from all of that. और उन सब की वजह से हम दुख भोग रहे हैं। We need a new plan. हमें नई योजना We की need a जरूरत new है, intelligence. हमें नई बुद्धि की जरूरत है And that should come from Krishna. और वो कृष्णा से आनी चाहिए। That's why Prabhupada said, I'm not telling you even to trust me. I'm telling you, just trust Krishna. इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझ पे विश्वास करो, बस कृष्ण में विश्वास करो। If you put your faith and trust in Krishna, Krishna will help you, He'll protect you. अगर आप अपनी श्रद्धा अपना विश्वास कृष्णा में रखेंगे, कृष्ण आपकी मदद करेंगे, वो आपकी रक्षा And करेंगे। you won't even understand how He's doing. Automatically He'll do. आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे कर रहे हैं, अपने आप ही वो करेंगे। Shilas. I'm going over. I made a cardinal sin. मैं ज़्यादा जा रहा हूँ, मैंने जो है एक बहुत खतरनाक अपराध कर दिया है। I talked too long. मैं ज़्यादा बोल गया, Please excuse me. मुझे क्षमा कीजिएगा। So the question is, what is the reason why Srila Bhaktivinoda Thakur didn't give initiation to Bhaktisiddhanta? Bhaktivedanta? Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta. Yeah. That is it because they were stressing to like this point about family, like this connection between guru and disciple? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, he said, because of my scholarship and my knowledge, I became, he said, we read last night, he said, I became a little proud. तो प्रभु का सवाल है कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा नहीं दिया क्योंकि वो इस बात को सामने रखना चाहते थे कि पारिवारिक रूप से परंपरा नहीं चलाई जा सकती, इस बात को रखने के लिए। लेकिन गुरुदेव ने उत्तर दिया, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा, इस भौतिक योग्यता के आधार पर और जो उन्होंने विद्वता प्राप्त की उसके वजह से उनके अंदर बहुत अहंकार था।
So this is very, right? Yeah. थोड़ा अहंकार था. So he's saying this is very good that I have such a spiritual master who, people will think that, he's a literate person or he's not so materially qualified. तो ये मेरे लिए It's बहुत very good for me. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि देख पाएंगे लोग कि मेरे आध्यात्मिक गुरु भौतिक रूप से उतने योग्य नहीं है, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. So that was one of the reasons. The other was that, yes, this thing about not like just a family, like the Goswami families, and there's different lineage families that it's passed by not by biological family. तो और ये एक बात थी और दूसरा कारण ये भी था कि जैसे गोस्वामियों की परंपरा चली आ रही है वो अपने पारिवारिक और जैविक जन्म के आधार पे उनको गोस्वामी का जो है खिताब दिया जा रहा है इसके खिलाफ थे. Because their preaching was very heavy against these caste Goswamis. क्योंकि वो बहुत कड़े तरीके से प्रचार करते थे इन जाति के आधार पर गोस्वामी खुद को कहने वाले लोगों के प्रति. So I think that could be another reason. तो मुझे ऐसा लगता है ये दूसरा कारण हो सकता है. Otherwise, from spiritual point of view, of course, he can initiate it. वरना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अवश्य वो उनको दीक्षा दे सकते हैं. Also, you could see that it's not a diksha line; it's also shiksha. So bona fide shiksha and bona fide diksha equal, identical manifestations of Paramatma Super Soul. तो असल में वो इस बात को भी दिखाना चाहते थे कि ये शिक्षा की दिशा है, शिक्षा का लाइन है और प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु एक समान और एक ही प्रतिनिधि होते हैं कृष्णा के परमात्मा के हमारे अंदर. This is a Shrota Parampara. ये श्रोता परंपरा है. That's another reason. What was another one we thought? Another one is first initiation. Because we all had these questions and we studied for a couple hours last night, so that's why we already were discussing about this topic. तो हमने पिछले रात इसके बारे में हमने पढ़ा तो इसलिए हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. First initiation was Harinam, and second diksha. It was like actual initiation. Bhaktivinoda Thakur gave Harinam, and Kishore Das Babaji Maharaj gave Brahman Diksha. So भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको हरिनाम दीक्षा दिया और श्रीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया. Like that. इस तरह से. It said that, that verse is there, Yasha Devi Parabhaktya, that one who has unflinching faith in the Guru and Krishna, all of the revealed scripture, all the purports, all the meaning of the revealed scriptures will automatically be manifested. ऐसे बताया जाता है अगर किसी को अटूट श्रद्धा है अपने गुरु में और कृष्ण में तो सारे वैदिक ग्रंथों के तात्पर्य उसको अपने आप ही प्रकाशित हो जाएंगे. So because of Babaji Maharaj's, Kishore Das Babaji Maharaj's unflinching faith in Guru and Krishna, everything was revealed to him internally. क्योंकि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की अटूट श्रद्धा अपने गुरु और कृष्ण में होने के कारण उनको सारे तत्व प्रकाशित हो गए. It was not because of the scholarship and reading. He was an illiterate person. और उनके विद्वता के आधार पे या उनके पठन के आधार पे नहीं, क्योंकि वो असल में अनपढ़ व्यक्ति थे. But when they would sit in the courtyard over in Godrum, Bhaktivinoda Thakur's house, then Babaji Maharaj was asked to speak about the Srimad Bhagavatam. लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर में गोदरू में उनके आंगन में बाबाजी महाराज को गौर किशोर बाबाजी महाराज को भागवतम बोलने के लिए कहा जाता था. Even though they were all high scholars. यहाँ तक कि वो सब बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े विद्वान थे वो लोग. Because they were just relishing his internal understanding and explanation. क्योंकि वो बस स्वाद ले रहे थे उनके भीतरी समझ का, भीतरी साक्षात्कार का. Just the pure nectar. कि शुद्ध अमृत मिल रहा था. All right. Any other thing? कोई अन्य चीज? One more. Why do we become rebellious initially to surrender to Krishna? Why do we become what? Rebellious. Rebellious? Become rebellious? We are already rebellious. प्रभु सवाल पूछ रहे हैं हम विद्रोही क्यों होते हैं कृष्ण को शरणागत करने के लिए. तो गुरुदेव बता रहे हैं हम बनते हैं, हम पहले से ही विद्रोही हैं. We're trying to become unrebellious. हम अभी जो है विद्रोही नहीं बनने का प्रयास कर रहे हैं. We're trying to get purified and learn how to, not be a rascal. हम शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बदमाश न बने.
We're trying to get rid of the rascal criminal mentality. हम इस तरह का बदमाश और अपराधी मानसिकता खत्म करने का प्रयास कर And रहे हैं learning how to cooperate. और सीखने का प्रयास कर रहे हैं कैसे सहयोग करना। Devotee means selfless. भक्त का मतलब है बिना स्वार्थ के, Real devotee. असल भक्त। They're doing for pleasure of Krishna, Guru Krishna. वो गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते But हैं। materialistic people, they're very selfish people. लेकिन भौतिकता वाले लोग बहुत ही मतलबी लोग होते Only हैं। worry about I, me and mine. वो हमेशा अपने और स्वयं और They मैं मेरा don't के बारे care में चिंता about the करते welfare of any other persons हैं। और दूसरे लोगों की भलाई के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं or करते, other living entities. दूसरे जीवात्माओं की, Because very narrow, miserly, क्योंकि narrow, बहुत kripana. सकरी और कृपण जैसे सोच होती है, So they're never satisfied. तो कभी संतुष्ट नहीं होते वो। It says you can give them the whole 3 worlds, they'll never be satisfied. कहा जाता है आप उनको पूरा 3 जगत भी दे देंगे फिर भी वो संतुष्ट नहीं होंगे, Because they're envious of Krishna, Krishna's devotees. क्योंकि वो कृष्णा से ईर्ष्या करते हैं, कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। Therefore they remain in this type of rebellious, uncooperative, materialistic, selfish consciousness. और इसी तरह से वो हमेशा इस तरह के भौतिक, विद्रोही और स्वार्थ वाले चेतना में होते हैं, कृष्णा से ईर्ष्या वाले चेतना में। So, He's saying that so why we become rebellious, even if you know that after surrendering we will be peaceful and happy. because we're addicted to the eating stool. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि फिर भी हमें पता है कि अगर हम पूरी तरह से शांत और सुखी हो जाएंगे कृष्ण को शरणागत करने के बाद, तो फिर भी हम अपना विद्रोहीपन क्यों बनाए रखते हैं? तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि हमें बुरी लत लगी हुई है, नशा लगा हुआ है विष्ठा खाने की। We're like hogs, two-legged animals. हम सुअर के जैसे हैं, 2 पैरों पर चलने वाले जानवर जैसे हैं। You can't give the hog a rasgulla. आप सुअर को रसगुल्ला नहीं दे सकते, He'll not appreciate it. उसकी सराहना नहीं करेंगे। He has a different food, isn't it? उसका Different खाना liking. अलग है, उसका पसंद अलग है। So this Prabhupada said it's very unfortunate that we're not attracted to Krishna. प्रभुपाद बताते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हैं। And then Arjuna, when he's talking to Krishna, he's asking Krishna, what is it, Krishna, that a person knows that this is really bad, I'm going to suffer like anything, and still does it anyway. तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं भगवद गीता में कि वो ऐसी चीज है कि लोगों को पता होता है ये बहुत बुरा है, इसको करने के बाद मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उसको स्वयं को करने से रोक नहीं पाता है। And Krishna says it is lust only, Arjuna. और कृष्ण ने बताया है सिर्फ काम की वजह से अर्जुन, The all-devouring sinful enemy of man. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। What is it that's forcing you? Even you know it's not good, you know you're going to suffer. कौन सी चीज है जो आपको मजबूर कर रहा है, आपको पता है ये बहुत बुरा है, आपको पता है उसको करने के बाद आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा, Still you'll not give it up. फिर भी आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। And Krishna said it is lust only, this is like a heart disease, the lust only, which is all-devouring sinful enemy of man. और कृष्ण ने बताया ये सिर्फ काम की वजह से है, ये हृदय रोग है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा विनाश करने वाला शत्रु है। So this lust is very, very deep-rooted. तो ये काम बहुत बहुत गहराई तक इसकी जड़ें हैं। Very, very difficult to give up this attraction and this attachment to lust. बहुत मुश्किल है इस आकर्षण और आसक्ति को छोड़ पाना काम वासना से। It says from Lord Brahma all the way down to the Indragopa, the ant, everybody is affected by this thing. ऐसा बताया जाता है ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक सभी इस काम से प्रभावित हैं। We wouldn't even be in the material world if it wasn't for this desire. हम इस भौतिक जगत में होते ही नहीं अगर हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा So नहीं this is होती। very deep-rooted desire. तो ये बहुत गहराई तक है इसकी इच्छाएं। So to uproot that takes incredible amounts of mercy from Krishna and the Guru, Sadhguru Vaishnava. तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही अतुलनीय कृपा की जरूरत पड़ती है साधु गुरु और कृष्ण की। And of course, if we cooperate with their instructions somehow or other, then that process of purification will be much quicker. अगर हम उनके निर्देशों के साथ सहयोग करेंगे तो किसी तरह ये प्रक्रिया बहुत तेजी से हो सकती है। But because we're not cooperating, लेकिन क्योंकि हम सहयोग because नहीं we're करते listening to हैं, this stupid mind, क्योंकि हम बेवकूफ मन को सुनते हैं। I used to tell that, my Gurudev, whenever he was talking about mature mind, it was just amazing. He's just like this
rascal, stupid mind. You know, he was like chastising the mind, you know. और ये बहुत अद्भुत बात थी, जब भी मेरे गुरुदेव मन के बारे में बात करते थे, वो कहते थे ये पागल मन, ये बदमाश मन, बेवकूफ मन। Are we speaking like that against our mind? We're saying, no, my friend, my mind, what should I think about today? क्या हम अपने मन के बारे में ऐसी बातें करते हैं, इस तरह से खिलाफ उनके बातें करते हैं? हम कहते हैं मेरे मन, मेरे मित्र, क्या चाहते हो आज हम क्या करें? What's our plan today? आज की क्या योजना है हमारी? We're supposed to be chastising, like putting that stupid mind in its place, instead with the servant of the mind. तो हमें डांटना चाहिए इस बेवकूफ मन को, उसके सही स्थान में लगाना चाहिए, उसके बजाय हम अपने मन के दास के रूप में, सेवक के रूप में काम करते हैं। If we'll not agree to be servant of Guru and Krishna, then we'll be the servant of uncontrolled mind and senses. That's another option. गुरु कृष्ण के सेवक के रूप में कार्य करने से स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम अनियंत्रित मन और इंद्रिय का सेवक बनकर काम करेंगे। And uncontrolled mind and senses means heavy lashes of Maya, heavy punishment. अनियंत्रित मन और इंद्रिय का मतलब है बहुत कड़ा प्रहार मिलेगा माया। Because it's very deep rooted in this rebelliousness. This is not so easy thing to get rid of this thing. क्योंकि इसके जड़ें बहुत गहराई तक हैं और बहुत मुश्किल है इसको अपने अंदर से बाहर निकाल पाना। A lot of mercy required. बहुत सारी कृपा की जरूरत है। A lot of purification. बहुत सारा शुद्धिकरण। That's why. We इसलिए have a heart disease. हमारा हृदय रोग And we है। have to recognize it. We have to be honest about it. हमें इसको जानना होगा, हमें इसके प्रति ईमानदार होना होगा। Just being sentimental and artificial, thinking we're already spiritual and we're already advanced and we already know this and that. We're just cheating ourselves. अगर हम इस तरह से भावपूर्ण रूप से, बनावटी रूप से सोचेंगे हाँ हम उन्नत हैं, हम कुछ जानते हैं, हम आध्यात्मिक हैं, तो हम खुद को ठग रहे हैं, कृष्ण को ठगने का Many times my Guru said, you cannot cheat Krishna. मेरे गुरुदेव ने कई बार कहा आप कृष्ण को ठग नहीं Every सकते। single thing that's going through your mind. वो हर एक चीज जानते हैं जो आपके मन में And चल he's रही है, testing you और वो आपकी परीक्षा लेते by हैं that. उसके माध्यम What से। does this person really want? ये व्यक्ति असल में क्या चाहता है? So it's a question of desire. तो इच्छा का सवाल है। So if we don't give up this asatsanga and do serious surrender sadhu sangha, satsanga, there's no way to get out of that condition. तो अगर हम बहुत गंभीरता से असत्संग का त्याग नहीं करेंगे और सत्संग साधु संग गंभीरता से नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है इस समस्या से बाहर आ पाना। Sometimes a little joke, you know, this person is so stubborn and so ignorant, so foolish. Even Krishna himself couldn't preach to this person. कभी-कभी हम मजाक करते हैं ये व्यक्ति इतना जिद्दी है, इतना मूर्ख है, इतना अज्ञान में है कि कृष्ण खुद आके इसको प्रचार करेंगे तब भी ये समझ नहीं पाएगा। Even Krishna would say, I can't preach to this person. यहाँ तक कि कृष्णा भी आके कहेंगे मैं इस आदमी को प्रचार नहीं कर पाऊंगा, असंभव scenario. असंभव दृश्य है ये तो। Totally incorrigible. पूरी तरह से इसको कुछ No नहीं किया जा interest, सकता। no desire, कोई रुचि नहीं, कोई इच्छा no नहीं, simplicity, कोई सरलता no नहीं, कोई open-heartedness, खुला हृदय नहीं, no honesty, कोई ईमानदारी नहीं, all crooked. बस कुटिलता। This is disqualification ये अयोग्यता है from getting any mercy. कि कोई भी कृपा हमें प्राप्त हो सकती। Then who else will help you? Heavy lashes. That's the only thing left. तो कौन हमारी मदद करेगा? सिर्फ कड़ा प्रहार, यही एकमात्र बस रहेगा। Because we refuse to listen. क्योंकि हमने अस्वीकार किया सुनने से। And Krishna said, if you refuse to listen and humbly accept it and try, then you'll be lost. You're just completely lost. Then you have to suffer. अगर आप विनीत भाव से श्रवण नहीं करेंगे, विनम्र नहीं होंगे और उस पर प्रयास नहीं करेंगे, तो कृष्ण बताते हैं आप भटक The जाएंगे। only last mercy is suffering. तो आखिरी बस आपको कृपा यही मिल सकती है। So बहुत Prabhupada सारा said you can मिलेगा। learn by hearing or by heavy lashes. प्रभुपाद बताते हैं या तो आप सुन के सीखेंगे या फिर कड़े प्रहार से सीखेंगे। And then we're getting heavy lashes and we're like, I don't deserve this. और जब हमें इस तरह कड़ा प्रहार मिलता है जीवन, हम कहते हैं मैं इसके लायक I'm नहीं so हूँ। sincere, serious devotee. I've done so much service. मैं बहुत गंभीर ईमानदार भक्त हूँ, मैंने बहुत सारा सेवा किया है। This is unfair. ये बहुत गलत है मेरे साथ। That we're suffering, either getting reaction or purification. We think, oh, this guru, he's giving me pain. और जब हमें He's दुख making मिलता my है, life painful. और जब हमें दुख मिलता है, हम किसी तरह के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, हमें कष्ट मिलता है, तो हम कहते हैं ये गुरु है जो हमें इस तरह का कष्ट दे रहा है। He's disturbing me now. ये अब मुझे परेशान कर रहा है। It's all disturbing information. ये बहुत तरह का परेशान करने वाली जानकारी है। And you're suffering because of the purification, and then if you don't accept the instruction of the guru, निर्देशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तब आप और दुख भोगेंगे क्योंकि आप गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। so there must be suffering.
तो दुख There अवश्य must होना be होगा, tapodivyam. तपोदिवम अवश्य करना होगा, And we want to avoid that. और हम इससे बचना चाहते हैं। We want an easygoing life. हम आसानी से जीवन जीना चाहते हैं। I always think that everybody wants discipline. मैं सब हमेशा कहता हूँ सभी कोई अनुशासन चाहते हैं जीवन में। Whenever you see a very disciplined person, it's actually very attractive. कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अनुशासन में रहता है, बहुत आकर्षक लगता है। So who doesn't want to be disciplined? तो कौन अनुशासन में नहीं रहना चाहता? We just don't want to pay the price to become disciplined. हम बस वो कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं कि जो हमें अनुशासन में रहने देगा, Because we don't like being told what to do. क्योंकि हम नहीं चाहते हमें कोई बताता रहे हमें क्या करना है। We think we belong to ourselves. हम सोचते हैं हम स्वयं के हैं। We're not thinking, no, you belong to Krishna. हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं। We belong to Guru Krishna. हम गुरु कृष्ण के हैं। That's why my Gurudev said, you don't belong to yourself. इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा था तुम अब स्वयं के नहीं रहे, And we don't like that concept. और हमें ये विचार अच्छा नहीं लगता। So what does it mean to be servant? तो सेवा का होने का क्या अर्थ है? We want to be the master, we want to be the enjoyer, we want an easygoing life. हम मालिक बनना चाहते हैं, हम आनंद भोगना चाहते हैं, हम आसानी से जीवन जीना चाहते हैं। And then it's like, we're thinking like paying the mafia, you know, you just give them a little money for some protection, you know. और हम सोचते हैं जैसे हम माफिया में कुछ लोग रक्षण के लिए हम कुछ पैसा जमा कर देते हैं। Right? I'm just do some seva, just so no demigods, Krishna, nobody will come after me, you know. No reaction will be there. मैं खुद सेवा करूँगा ताकि कृष्ण कोई देवी देवता मुझे आके परेशान ना करे या मुझे ऊपर किसी तरह का प्रतिक्रिया ना दे पाप करने का। That's not exactly pure devotional service, is it? ये असल में शुद्ध भक्ति नहीं है। Okay, does that answer the question? क्या सवाल का जवाब मिला? I think that's enough for today. पर्याप्त For है now. आज के लिए अभी के What do you लिए। think? आप क्या सोचते हैं? I hope you feel a little better. I feel much better now. मुझे उम्मीद है आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। We tried to be sincere. हमने प्रयास किया ईमानदार होने का, And I feel that we got Kishore Das Babaji Maharaj's mercy today. और मुझे ऐसा महसूस हुआ हमें गौर किशोर दास Such बाबाजी महाराज की Vaishnava कृपा का प्रयास। Haru Dukhi. ऐसे वैष्णव परा दुख दुखी, When they see us suffering condition, they want to help us. They're suffering seeing us suffering. जो वो हमें दुख में देखते हैं वो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो स्वयं दुख भोगते हैं जब वो हमें दुख में देखते हैं। So and the Lord is also the same way. और भगवान भी ऐसे ही, That's why He comes Himself इसलिए वो स्वयं आते हैं and He sends all His dearest devotees here. और अपने सबसे प्रिय भक्त यहाँ भेजते हैं। How He's taking His dearest devotees and putting them in the prison house. कैसे वो अपने सारे प्रिय भक्तों को लेकर कारागार में क्यों डालते हैं? Because He has love and affection for all the souls. क्योंकि उनको प्रेम स्नेह अपने सभी जीवात्माओं से, And He wants to purify us and deliver us, get us out of our suffering condition. We're so foolish, we don't even realize we're suffering. वो हमें शुद्ध करना चाहते हैं, हमें मुक्त करना चाहते हैं हमारे दुख में परिस्थिति से। हम इतने मूर्ख हैं कि हम देख भी नहीं पाते हम दुख में स्थिति में हैं। That's why we're not taking it serious. इसलिए हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। Okay, something we'll do. हो सकता है हम कुछ करेंगे। That means we're not understanding the reality of our situation. इसका हम अपनी असल स्थिति की सच्चाई को नहीं देख पा We're रहे। ignorant. हम अज्ञान Too में much tamagun. बहुत ज्यादा तमोगुण हैं। Therefore, we cannot hear anything. We cannot accept any good advice. इसलिए हम सुन नहीं सकते, किसी अच्छे सलाह को हम स्वीकार नहीं कर Then सकते। how else will we learn? That's the problem. तो कैसे हम सीखेंगे, ये समस्या है। Then only abhilashes. तो सिर्फ कड़ा प्रहार। Any last thing? कोई आखिरी चीज? Good? ठीक है? Everybody's good? सभी ठीक हैं? Yes. हाँ। Gurudev, he told It's so difficult when I look at him because he looks like my godbrother. इतना मुश्किल है इसको तरफ देखता हूँ जब भी मुझे अपने गुरु Every भाई की time याद I आती look है। at him, I just think of my godbrother. जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ मुझे अपने गुरु भाई की याद आती And है। look, when he was young man, he looked exactly like you, you know. जब वो जवान थे एकदम आपके जैसे ही दिखते थे वो। So every time I look, I just immediately I think of him, you know. तो जब भी मैं इनकी तरफ देखता हूँ तुरंत मुझे उनकी याद आती है। He's a Maharaj now. अब वो महाराज बन चुके हैं। Maybe one day you can also do. हो सकता है एक दिन आप भी बन जाएंगे। Hare Krishna. Hare Krishna. So, but for now, just cook nicely because everyone appreciates it, you know. लेकिन फिलहाल आप अच्छे से रसोई कीजिए क्योंकि सभी लोग सराहना कर रहे हैं। Work hard now, samadhi later. अभी कड़ी मेहनत कीजिए, समाधि बाद में लेंगे। That's what Prabhupada said. ये प्रभुपाद ने Work कहा। hard now, samadhi later. अभी कड़ी मेहनत कीजिए बाद में समाधि लेंगे।
Do something for the preaching mission. अभी कुछ कीजिए प्रचार के आंदोलन। First, help yourself so you can help other people. स्वयं की मदद कीजिए पहले ताकि दूसरे लोगों की मदद कर सकें। Not selfish movement. ये स्वार्थिक आंदोलन नहीं है। The selfishness and being Vaishnava is incompatible. अगर हम इस तरह स्वार्थ हैं और लेकिन हम साथ में वैष्णव भी नहीं रह सकते। This is demoniac behavior, consciousness. ये आसुरिक बर्ताव है, आसुरिक चेतना है। So, Krishna knows I hope so. मुझे उम्मीद है। past, present and future. He knows already present, past, present, future. Yeah. And how can I know my present and If you know Krishna, then your friend knows past, present, and future. Your friend will tell you something, right? Your best friend, yeah, he'll tell you many things. तो प्रभु बता रहे हैं कृष्णा भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? तो गुरुदेव बता रहे हैं आप कृष्णा को जान जाओ, वो आपके मित्र हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, वो आपको बताएंगे। Right? Krishna said, Arjuna, because you're my friend, कृष्ण ने कहा अर्जुन क्योंकि तुम मेरे मित्र and हो you have love and affection for me, और तुमको प्रेम स्नेह है मेरे and प्रति, you're not envious of मुझसे me, ईर्ष्या नहीं करते, I'll tell you everything. मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। So you have such a friend who knows everything, and you want to know something, definitely he'll help you. तो अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो सब कुछ जानता है और आप कुछ जानना चाहते हैं, अवश्य वो आपकी मदद करेंगे। He'll tell us what we can understand, वो हमें बताएंगे जो हम समझ सकते हैं and what we need to और understand. क्या हमें समझने की जरूरत है। Try it. प्रयास कीजिए। When Krishna, Maya bewilders everyone. Even Lord Brahma became bewildered. माया सभी को भ्रमित कर देती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए थे। So when we become completely bewildered, then we cannot depend on ourselves. तो हम जब पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे तो हम स्वयं पर निर्भर नहीं हो पाएंगे। Because nothing is there, nothing will work. क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। Just like Arjuna, right? He finally said, okay, I can't figure this out. जैसे अर्जुन ने कहा अंत में कि मैं अब कुछ पता नहीं लगा सकता। I'm just becoming more baffled, more confused. I'm losing out spiritually and materially. Better I just surrender to Krishna. मैं और ज़्यादा भटकता जा रहा हूँ, भ्रमित होता जा रहा हूँ, मैं नहीं पता लगा पा रहा क्या भौतिक रूप से करूँ क्या आध्यात्मिक रूप से करूँ। बेहतर होगा मैं कृष्ण को शरणागत कर दूँ। Pray, cry to Krishna. और कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, Please कृष्ण के help me सामने to रोइए, understand what you want me to do. मुझे समझने में मदद कीजिए कि मैं आप मुझसे Please क्या make चाहते it हैं। crystal clear for me, मुझे शीशे की तरह साफ कर दीजिए मेरे लिए, so that I can really dedicate myself to ताकि try मैं to follow that. अपने आप को समर्पित कर सकूँ उसको पालन करने के लिए। If we don't have that information, why will you make that instruction in your life and your soul? अगर हमारे पास ये जानकारी नहीं है तो उस निर्देश को अपने जीवन का सार कैसे बनाएंगे? Why you're making life and soul is because Krishna convinced you this is what I want you to do. क्यों आप उसको अपने जीवन का सार बना रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने आपको आश्वस्त किया है कि मैं आपसे ये करवाना चाहता हूँ। So if we're begging Krishna, please tell me kindly, what do you want me to do? And I'm prepared to do it, why won't Krishna tell you? तो अगर हम भीख मांग रहे हैं कृष्ण से मदद के लिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, तो क्यों वो हमें नहीं बताएंगे? He wants to tell us. वो हमें बताना चाहते हैं, We just don't want to hear it. हम बस सुनना नहीं चाहते हैं। The problem is not from Krishna's side, problem from our side. कृष्ण की तरफ से कोई समस्या नहीं है, We're हम not समस्या हमारी really तरफ से asking है। him. हम असल में उनसे मांग नहीं We're रहे हैं। just hoping whatever we're doing that we want to do, that somehow Krishna will accept some part of that. हम बस ये उम्मीद कर रहे हैं जो भी हम करना चाहते हैं कृष्णा उसको स्वीकार करे, कुछ भाग को कम से कम स्वीकार कर ले। That's not pure devotional service. वो शुद्ध भक्ति नहीं है। Pure devotional service is what does Krishna want? शुद्ध भक्ति ये है कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं And then our willingness to understand it and to try our best to execute it. और हमारी कितना इच्छा है उसको समझने के लिए अपना श्रेष्ठ हम उसको प्रयास करें पूरा करने के लिए। And then Krishna is the witness and the judge to say. और कृष्णा गवाह है, न्याय करता है, वो हमें बताएंगे। And depending on the quantity and the quality of that surrender and service, Krishna says, I'll reward you appropriately, proportionately. और हमारी सेवा की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पे वो हमें बताएंगे, हमें फल देंगे कृष्ण। So if your adhikar is to bang nails into the wood and not preach, and all you're doing is preaching, why do you think Krishna is going to accept that seva, that preaching seva? तो आपका अधिकार है सिर्फ कील लेकर लकड़ी में ठोकना और आप प्रचार नहीं करना, तो फिर आप पूरी तरह बस हमेशा प्रचार करने में लगे हैं, तो क्यों कृष्ण आपके प्रचार की सेवा को स्वीकार करेंगे? Krishna is telling you not to preach. कृष्ण आपको कह रहे हैं प्रचार मत करो, So then why will he accept your preaching? तो फिर क्यों आपके प्रचार को वो स्वीकार करेंगे?
No, it's preaching. I'm talking about Krishna. I'm trying to help the conditioned souls. मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ, मैं बद्ध जीवात्मा की मदद करने का How do you प्रयास कर रहा say हूँ। Krishna is not accepting this preaching seva? The कैसे whole आप preaching mission is based on preaching. How is not accepting? कैसे आप कह सकते हैं कृष्णा मेरे प्रचार की सेवा को स्वीकार नहीं करे? हमारा पूरा प्रचार का आंदोलन प्रचार के ऊपर ही निर्भर है। He says there's no one more dear to me than one who's preaching. कृष्णा ने ये कहा है कि मुझे कोई उतना ज्यादा प्रिय नहीं है जो मेरा प्रचार So बहुत how you ज्यादा say प्रिय है। he's not accepting my preaching? तो कैसे आप कह सकते हो मेरा प्रचार स्वीकार नहीं कर रहे हैं? You see how it can be very confusing. अब देखिए किस तरह से भटका सकता है वो, क्योंकि देखने में बहुत आध्यात्मिक लग रहा है ये। Just like Arjuna is a Kshatriya, he's supposed to fight in a war. जैसे क्षत्रिय है अर्जुन, वो उसको युद्ध में लड़ने की जरूरत है। But he's trying to act like a brahmana, like a renunciant. लेकिन वो ब्राह्मण के जैसा नाटक कर रहा है और अपने आप को त्यागी दिखाने का प्रयास कर रहा Not है, his seva. क्योंकि वो उसकी सेवा So नहीं him है। acting like a brahmana is adharma. तो अगर वो ब्राह्मण के जैसा अगर कार्य करे तो उसके लिए वो अधर्म है। And him fighting and killing even his own family members because Krishna wanted it, that's dharma. और अगर वो युद्ध करे अपने स्वयं के परिवार के लोगों की हत्या करे इस युद्ध में, तो वो उसके लिए धर्म है, क्योंकि कृष्ण उससे वो चाहते हैं। ये So the सनातन point है। is, what does Krishna want? तो अब सवाल ये है कि कृष्णा क्या चाहते And हैं? if you just do that for his pleasure, that's the definition of pure devotional और service. अगर आप बस वही करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो यही है परिभाषा शुद्ध भक्ति की। Otherwise, what are we calling bhakti? वरना हम भक्ति किसे कह रहे हैं? Well, I decided to do this, and Krishna is duty bound to accept it. That's a bhakti. मैंने ये करने का फैसला लिया है और कृष्ण कर्तव्यबद्ध है उसको स्वीकार करने के लिए, ये भक्ति है। So we have to know, what does Krishna want us to do? तो हमें ये जानना होगा कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। So if you're praying and crying and begging and seriously trying to convince Krishna that you want to hear it and you're going to try your best to follow it, why won't Krishna tell you? तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कृष्ण से और आप कह रहे हैं, आप आश्वस्त कर रहे हैं, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, मैं उसको करना चाहता हूँ, तो कृष्ण क्यों आपको नहीं That बताते? doesn't make any sense. इसका कोई मतलब नहीं बनता। He wants to tell वो you. हमें बताना चाहते हैं, He's waiting to tell वो you. इंतजार कर रहे हैं हमें The बताने। problem's not Krishna's side. समस्या कृष्ण की तरफ से है, It's our problem. हमारी समस्या है, Because we're not really asking. क्योंकि हम मांग नहीं रहे हैं, पूछ Because नहीं रहे हैं। we think we know what's best for us. क्योंकि हम सोचते हैं हम जानते हैं हमारे And लिए we're अच्छा क्या है। attached to those ideas and those plans. और हम उन विचारों से, उन योजनाओं से And we're आसक्त not हैं। trusting Krishna. और हम कृष्ण में विश्वास नहीं कर रहे हैं। We're theoretically accepting Krishna as God, but we're not trusting Him practically. हम मौखिक रूप से विश्वास कर रहे हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन हम व्यावहारिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको। That's the difference. ये अंतर है। Did you get your answer? क्या आपको उत्तर मिला? So? It's every instructions comes from Guru. Huh? Every instructions come from Guru. It comes from Krishna Via Guru. via the Guru. तो वो पूछ रहे हैं कि सारे निर्देश हमें गुरु से मिलते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि सारे निर्देश कृष्णा से मिलते हैं, गुरु के माध्यम से। If you're praying to Krishna, I need to know, and I'm prepared to do it. Now it's just how is Krishna going to deliver the answer to you? अगर आपने कृष्णा को आश्वस्त कर लिया है कि मैं जानना चाहता हूँ और मैं उसको करना चाहता हूँ जो आप मुझे कहेंगे, तो अब ये कृष्णा के ऊपर है कि वो आपको कैसे बताएंगे। And he does it through pure via medium of bona fide guru and disciplic succession. और वो करते हैं अपने शुद्ध माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, जो परंपरा में है। And then when the guru tells, then in the heart Krishna will say, yes, this is very good if you just follow this thing. Dedicate yourself to that instruction. और जब गुरु कुछ कहते हैं तो कृष्ण हमारे भीतर परमात्मा वो हमें बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे कि हाँ ये मुझसे आ रहा है, आपको अपना समर्पित करना चाहिए इसको पूरा करने के And लिए। then you'll see when we simply accept it and sincerely try to execute, we immediately start getting all of the results. और आप देख पाएंगे जब तुरंत आप उसको स्वीकार करते हैं, उस पर कार्य करने का प्रयास करते हैं, तुरंत ही आपको सारे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। All nice spiritual result will automatically start happening, which is undeniable in your life. तुरंत ही सारे आध्यात्मिक फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। So that should give us more faith. तो ये हमें और श्रद्धा देगा। Otherwise, how is it working? When you accept it, it works wonderful. When you reject it, when you're not cooperating, then everything goes in opposite direction. तो फिर हमें यही चीज श्रद्धा देगा, जब हमने सही तरीके से स्वीकार किया, पालन करने का प्रयास किया, हमें सारे अद्भुत फल प्राप्त हुए, और जब हमने उसको स्वीकार नहीं किया तो हमें सारे गलत फल प्राप्त हुए।
So one devotee said, look, I don't understand what he's saying, but when I accept it and follow it, good things happen. And when I, for some reason, when I don't, everything bad happens. That's all he understood by the results. एक बार एक भक्त ने कहा कि मुझे पता नहीं वो क्या बातें कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं बस उसको पालन करने का प्रयास किया, मुझे सारा अच्छा फल प्राप्त हुआ। जब मैंने नहीं किया तो मुझे सारा गलत फल प्राप्त हुए। तो उस तरह से वो समझ पाए, सारे फलों के माध्यम से वो समझ पाए। Prabhupada gives an example, like if you're really sick and the doctor gives you a nice medicine, right? You just pop it in your mouth and it cures you, then you understand, oh, that's a nice medicine. तो जैसे आप प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको कुछ अच्छी दवा देते हैं, आप उसको अपने मुंह में डालते हैं और आप उससे ठीक होने लगते हैं, तो तब आप समझ सकते हैं कि अच्छी दवा है। You don't even know what's in the medicine. आपको पता नहीं हो सकता है पता ना हो कि दवा के Later on, Prabhupada says you may find out what's inside of that medicine, like biologically, chemically, why did that benefit you? बाद में आप पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि जैविक रूप से, रसायन के रूप में उसके दवाई के अंदर क्या डाली गई थी जिसकी वजह से आपको फायदा प्राप्त हुआ। But in the beginning, you're sick. I'm sick. That's a doctor. He has medicine. I take it, and it killed the disease. That's what you know at that point. शुरुआत में बस आप इतना जानते हैं कि आप बीमार हैं, ये है डॉक्टर, इनके पास ये दवाई है, इसको मैं लूंगा तो मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। शुरुआत में हम बस इतना जानते हैं। Then as you go, you get more and more knowledge and realization. Then you'll come to understand more. और जब आप धीरे-धीरे और ज़्यादा ठीक होने लगते हैं, आप ज़्यादा चीज़ें समझने लगते हैं कि कैसे ये काम कर रही है। Or if you take poison, it'll kill you. या फिर आप जहर लेंगे तो आप मर जाएंगे। You don't even know what's in that poison. हो सकता है आपको पता ना हो जहर के अंदर क्या था। Later on, you may find out when you're in another body somewhere else. बाद में आप पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं जब आपको कोई दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए मरने के बाद। So later, gradually you'll understand how it's working. It's not that we have to understand and realize everything first and then surrender to Krishna. तो जैसे धीरे-धीरे हम इसको करने लगेंगे, उसके फल के माध्यम से हम समझने लगेंगे कि ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमें सारी चीजें पहले ही बता दी जाएगी ये कैसे काम करने वाला है, तब जाके हम शरणागत करेंगे। Sometimes people, I told before, people come and they say, if you're the Maharaj, then you please tell me, the rest of my life. What can I look forward to? कई बार लोग मेरे पास आकर कहते हैं, Tell me what is my future. मेरे पास आके कहते हैं कि आप महाराज हैं, तो आप मुझे बताइए कि मेरा पूरा भविष्य कैसा होगा, मेरे जीवन में आगे क्या होगा। Tell me what I should expect. क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए, बताइए। Right? Well, that all depends on whether we're accepting and cooperating or not. तो ये उसी बात पे निर्भर है, हम स्वीकार करेंगे, सहयोग करेंगे नहीं जो वो हमें कहेंगे। How can you say it's going to go like this? If you 100% surrender, it will go like this. If you won't 100% surrender, how you can say how it's going to go? तो अगर Krishna will say how it will go. अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत करेंगे तो फिर वो सही तरीके से जाएगा। अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं वो सही तरीके से जाएगा। कृष्णा बताएंगे आपने कितना किया। So it's not a valid type of question. तो ये कोई मान्य सवाल नहीं है। Tell me everything and what I should expect, and then I'll tell you whether I'll surrender to Krishna or not. पहले मुझे सब कुछ बताओ और मुझे क्या क्या मिल सकता है, क्या उम्मीद मैं करूंगा, तब मैं शरणागत करूंगा कृष्ण को। मैं सोचूंगा मैं शरणागत करूंगा या नहीं। So Krishna has his own way of doing, and we're like, okay, but we have our own way of doing. कृष्णा का अपना कुछ तैयारी है, किस तरह से वो करना चाहते हैं और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम कैसा करना चाहते हैं। So we're still competing with Krishna. अभी भी हम कृष्ण के साथ प्रतियोगिता ही कर रहे हैं। Like Prabhupada said, you say, the sun it rises on this side, जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे, कोई व्यक्ति कहता है सूर्य जो है इस तरह से उगता है, इस and तरह then some man says, well, I think it should rise on this side. और फिर कोई आदमी आकर कहेगा कि नहीं इसको तो इधर से उगना चाहिए। It's like, what is the value of this type of argument? इस तरह के बहस का क्या मतलब है? Or Krishna said it, the sun rises in the east, right? कृष्ण ने कहा है सूर्य पूर्व से उगता है। So you're being rebellious or mentally speculating and saying, well, I think it should rise in the west. और अगर आप मनोधर्म कर रहे हैं और इस तरह से विद्रोह में कह रहे हैं कि नहीं इसको है पश्चिम से उगना चाहिए। So what is the value of that, that type of calculation? तो इस तरह के गणना का क्या अर्थ है? It's nonsense, actually. असल में बकवास है। So Prabhupada said Krishna consciousness is exacting science. प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है। It's just to be heard and executed. इसको बस सुनना चाहिए और इसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। Otherwise we're just manufacturing, well, I think it should be like this, or this is the way I want to do it. It's not going to work that way. वरना आप निर्माण करने का प्रयास करेंगे, हाँ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, इस तरह से काम नहीं करेगा। Krishna will say. कृष्ण बताएंगे।
I think that's enough, everyone. Thank you very much. Of course, it's never enough. अवश्य कभी पर्याप्त नहीं हो सकता. Shri Jagannatha ki, Srila Prabhupada ki, Shri Bhagavata Das Babaji, Shri Gurudev ki, Swami the Bhaktisiddhanta ki, Guru Premanande, Hari-katha. Thank you, everybody. Hare Krishna. I hope you get all the mercy today. मुझे उम्मीद है आप सबको कृपा मिली होगी आज. His Holiness Murali Krishna Swami Maharaj ki.